Today's lectures, when begin, are going to be in absolutely examination condition, no extra talks, no comments, when to take a break, that will be my discretion, nobody will suggest. For how much time to take the lecture, that will be my discretion, you will not have a choice at all. So should it be up till 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock? That's my choice. recording बंद करते हैं. Okay. Lecture starts now. We are first going to begin with the plan of the whole day will be like this. We would take those chapters which carry the high weightage, which I feel you can surely get marks in. We are going to start with time value. We would not solve only the simple questions, but I have collected the questions from the few question papers of the previous past years. So we will first do the time value. We would then go over to the correlation regression. That will be followed by probability. That will be followed by distributions, permutation, combination, MCT, MD. These chapters we have already taken as the thorough revision. So these all chapters considered together, set relation function we have completed on thoroughly. So these all chapters taken together surely will mean 70 marks and will surely mean that you are not going to fail. Now, if required, if I feel that some extra time has to be given, then the lecture will be taken even tomorrow. Passing is objective. We are going to be success bound. We are not going to be time bound. I had promised all of you when you took an admission and when we met on the first day that if you give me the positive response, I will not allow you to fail. And I mean it. अजिबात मध्ये बोलायचं नाही.
कहते हो यस सर, पर पढ़ाई के लिए करते कहते हो नो सर. This is not good. We said time value of money. Time value of money basically comprises of first type, that is based on simple interest. Now what happens that in case of simple interest, the formula for the interest is P into N into R, and that over 100. Whereas what is A? That is P into bracket 1 plus NR over 100. The one thing that you have to remember here is that in case if you have n months, then you have to convert them to years. And how you do that is n divided by 12 years. Reason is very simple, that months ज़्यादा होते हैं, years कम होते हैं. ईयर एक ही होता है, मंथ्स 12 होते हैं. तो ईयर टू मंथ कन्वर्जन विल बी बाय डिवाइडिंग बाय 12. बट समटाइम्स while converting the answers, you have to convert n years to the months. Then it will be 12 into n, these many months. Basics we have done many times, but this is revision, and revision has to be thoroughly done. If you mug up, you will forget. 1 year has 12 months. So year 1, months 12. तो months 12 होते हैं, year 1 होता है, तारे 1000 होते हैं, चांद 1 होता है. Now, now the second type of that is compound interest. Now while dealing with compound interest, you have to understand that the basic formula for the compound interest is P into bracket 1 plus R over 100, that raised to N, that minus 1. Whereas A is equal to P 1 plus R over 100, that raised to N. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है और फिर ए का फॉर्मूला अलग है. The one thing that you have to understand is that when the money doubles, P is P, A is 2P. So whenever the wording is that money doubles, it's P is P, A is 2P. Money triples means P is P, A is 3P. When the money rises, increases say by 23%, it will mean P is P, A is 1.23P. But when you say interest is say 23% of P, then it means P is P and interest is 0.23P. So A, money grows by 23% and interest is 23% of P. ये दो अलग चीजें हैं.
Is that over? Then quite a few times you require a wording about the difference between compound interest and simple interest. Very popular situation. In that case, what happens is that compound interest is P, 1 plus R over 100 that raised to N, that minus 1, and minus simple interest is PNR over 100. This is simple interest. So all what I can do is that P can be taken common, and then you have 1 plus R over 100 that raised to N, that minus 1, minus N into R over 100. P has been taken common. It's very popular wording. I hope you don't have any subject ahead tomorrow, na? Accounts is there tomorrow. Then we can meet day after tomorrow as well. See, we are going to take. See, क्या होता है रात में वो 1 घंटे में होता नहीं है. So what we will do is. This is marathon lecture. Outside students are hearing that. Is that over? The one more situation is that you had the changing rates of interest. The changing rates of interest. In that case, what would you do? You will make the chain of terms. You will make a chain of terms, whether it is simple interest, whether it is compound interest, whether it is depreciation. You will make a chain. In that case, A will be equal to P, 1 plus R1 over 100 that raised to N1. मतलब जो पीरियड के लिए R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 plus R2 over 100 that raised to N2 and like that. डेप्रिसिएशन में सिर्फ क्या होता है, प्लस का माइनस होता है, 1 माइनस होता है. बहुत सारे लोगों को कुछ नया नया सुन रहे हैं ऐसा लगता होगा. हो गया क्या? हाँ. Now, look at me. In case of the varying rates of interest, imagine for the, here you start first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. For the first 2 years, rate of interest is 7%. For the later 3 years, the rate of interest is 9%. And then for the later 2 years, the rate of interest is 10%. And then they will ask you the average rate of interest. They will ask you the average rate. In that case, what will you do? You will use the formula for the weighted mean. And what is weighted mean? Summation fx upon summation f. तो होता क्या है कि 7 is occurring 2 times. So it will be like 7 into 2. 9 is occurring 3 times. So 9 into 3. And then 10 is occurring 2 times. So 10 into 2. That divided by how many years are there? That is 2 plus 3 plus 2. This will be the average rate of interest. तो वेरिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में एवरेज निकालना है तो फिर इट इज एन एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ वेटेड एवरेज, समेशन fx अपॉन समेशन f.
Is that clear? That's all about the simple interest, compound interest. Now the third type being compounding being done half yearly, quarterly, monthly. So in that case, what do we do? What is n years? What is n years? Will be 2n half years, will be 4n quarters, and 12n months. So period is multiplied. And what is r percent per annum is r by 2% for half year, r by 4% for quarter, and r by 12% for month. So this is about the rate of interest. यहाँ डिवीजन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में. Is that clear? We are not taking these marathon lectures just for the sake of taking something, just for the sake of showing something, just for the sake of exhibiting something. We are taking it because I seriously want you to get success. So please be focused, stay focused on what is going on. Over. That's number 3. Type number 3 will solve the problems. Type number 4 refers to the effective rate of interest. Type number 4 refers to effective rate of interest. Now here, sometimes there is a confusion. And the confusion is that if you refer to the module, the formula given therein is 1 plus I raised to n minus 1. That is the formula given in the module. But mind well, just wait. Mind well, this is only if n is 1 year. This is not true in general. तो एक ईयर है तो ये फॉर्मूला. But if number of years is 2, 3, 4, 5 more than 1 year, then what you have to do, first find A, that is equal to P, 1 plus R over 100, that raised to N. Then find interest, which is A minus P, and then you have to compute the effective rate of interest by saying that this is interest divided by P, and then mind well, N is the number of years, not months, multiplied by 100. But if you notice very carefully that in interest formula there is P, तो वो ऊपर ये जो P है ना, ये वाला P, that P will be cutting with denominator वाला P. So principal पे ये dependent नहीं होता है. न्यूमरेटर में भी P है ना इंटरेस्ट के फॉर्मूला में, वो P और डिनोमिनेटर वाला P कट होता है. And therefore a note here is that the effective rate of interest does not depend on principal, does not depend on the principal amount P. E does not depend on P, is independent of P. Is that clear? But it does depend on N. But if N is not given, you can take 1 year. So my suggestion to you is, if they ask you the formula as a MCQ, you can write this formula. But if you want to do the calculation on effective rate of interest where N is 1 year se jada, then don't use this formula. This is wrong. It will give you the wrong answer.
There's a doubt sometimes people have asked to me. That some module has given this formula, you are telling something, some other thing. Because I'm telling in general. Is that clear? Type number 5. Type number 5 is about the depreciation. In that case, what happens is that the present value is P. ये जो future value A होता है, that is the depreciated value. That is the scrap value. That is the book value remaining in the books of accounts. Of course, that is the future value. R% per annum is the rate of depreciation. Is the rate of depreciation. Now, N years is known as the effective life of that machine. Is the effective life of that machine. Why? Because you are selling out that machine. तो आपके लिए वो मशीन का लाइफ खत्म हो गया. And then the formula being A is equal to P into bracket 1 minus R over 100 that raised to N. And if they ask you depreciation, then obviously that is P minus A. Starting value minus reduced value will be the depreciation. Depreciated value and depreciation में फर्क ये है. Depreciated value is the value remaining and depreciation मतलब कितना reduction हुआ है. Clear? यहां एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि if I say that the depreciation is by 30%, very important, and if I say depreciated to 30%, कहां कहां डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को, गलतियां कहां होती है, that I precisely know, like the mother precisely knows what her child wants. समझा? तो इसको बहुत केयरफुली देखो क्योंकि यहां मिस्टेक्स होती है. तो अगर बाय 30% है तो फिर क्या होगा कि P is P, reduction is 30%, तो remaining value is 70% of P. And if it is reduced to 30%, P is P and A is 30% of P. ये दो का फर्क समझो. Clear? Now here what happens is that you happen to come across the population growth or decline. So what happens is that, listen carefully, whatever is the change in population, whether it is growth or fall, that is like the compound interest if it is a growth, and it is like depreciation if it is a fall. So, if the population is growing, then it will be like A is equal to P into 1 plus R over 100 that raised to N. And if the population is declining, I expect this decline question because it has not been asked at all in last 35 years. तो
कहीं तो एक पेपर सेटर को चेंज करना होता है. तो in that case, suppose if I tell you birth rate is the fertility rate, is the immigration rate. क्या वर्ड यूज करना है ये पेपर सेटर का डिस्क्रिप्शन होता है. सपोज दैट इज 42/1000. 42/1000. Death rate, mortality rate, immigration rate is suppose 22/1000. Then the rate of growth, death rate कम है ना, तो rate of growth will be 20/1000. That means 2/100 means 2%. But यही अगर उल्टा है, मतलब if the birth rate is 22/1000, death rate is 42/1000, then it will be the rate of fall, and that will be 2%, and then it will be problem like depreciation. Is that over? Good. तो फिर that's all about the type number 4, 5, depreciation. And now I come to annuity. Now when it comes to annuity, देखो शॉर्ट टाइम में हम पूरा कंटेंट को कवर कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कैलकुलेशन एट प्रेजेंट. थोड़ा सा स्पीडी लेना चाहिए ना. रिवीजन शुड बी लिटिल फास्ट बट देन एट द सेम टाइम इट शुड बी फुल्ली कवरिंग एवरीथिंग. Look, when it comes to annuity, the very basic question is, how do you identify that the problem is annuity? Whenever the payment is per month, per quarter, per half year, per year, it is annuity. And when it is a single payment, it will be either simple interest or compound interest. वन टाइम पेमेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम होता है, बट अगर पर मंथ पर क्वार्टर है तो फिर वो एन्युटी होता है. एंड दैट इंस्टॉलमेंट पर मंथ, per quarter, per year, etc. is nothing but annuity, and that annuity is X. Of course, that annuity can be called by another letter, say A. That's okay. That annuity is X, which will be per month, per quarter, etc. N is of course the number of years, etc. And then you know I is equal to R divided by 100. I is R divided by 100. Now, if they are asking you the present value, in general this is applicable whenever you are talking about the loan. ये लोन का मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू होता है, हाँ, in that context, of course. So that present value is given by the formula x over I, 1 minus 1 plus I raised to minus n.
नाउ कैलकुलेशन का सीक्वेंस क्या होता है वो नोट्स निकाल के देखो एक बार. 1 अपॉन करने का फिर वो. And whenever they ask you the future value, that is also called the sinking fund. That is also known as the sinking fund. Future value is sinking fund. Standard. And that is A is equal to x over I. 1 plus I raised to n and that minus 1. Clear? And the relation between the two. Now that is also important. The relation between the two is the relation between the two. One of them is 1 upon P minus 1 upon A is equal to I over X. And the other one is, of course, A is equal to P into 1 plus R over 100 that raised to N that we know. Future value ka formula. Now, when do we use this? We use this first one when the annuity X is given. When annuity X is given, but the period N is not given. It depends. कौन सा formula use करना है? It depends on what information has been provided. And we use this when annuity X is not given. When the annuity X is not given, but N is given, period is given. So that is the couple of formulae connecting P and A in case of annuity. Clear? Now, see, the job is going to be very simple. They will give you few values and they will ask you one value. They will give you X, they will give you R, they will give you N, they will ask you present value or future value. Or they will give you the present value or future value. They will ask you X is what or N is what or I is what, something like that. 3 values will be given and the 4th value will be asked. So it is just a matter of substitution. Importantly, you have to consider applications of annuity. Now what happens is that there are some typical applications of this, जहां शायद numbers अलग हो सकते हैं, situation will be same. So what I say is that the company, quickly we will do the revision. I mean, we are not going to do the calculations. That you can manage. I ask you, the company has a problem. Buy a machine. For that matter, pay. And then lease it out. Rent it out. And receive the rent per year, per month, जो भी है. Clear? This is received. तो होगा क्या? जो पे करना है वो है प्रेजेंट वैल्यू पेएबल. आज पैसा देना है. रिसीवेबल साइड को क्या होता है कि व्हाट यू रिसीव इज द रेंट एक्स per month, per year, per quarter, etc. So what would you do? Of course, N will be given, R will be given. That R is sometimes called the cost of capital.
The cost of capital is rate of interest. Just keep in mind. In that case, what will you do? You will find the present value of this. That is present value receivable. Now, in case if present value receivable that you have found is more than present value payable, then business is favorable, do the business. If present value receivable is equal to present value payable, that is called break even point. करना है business तो करो, नहीं तो छोड़ो. No loss, no profit. And in case if present value payable is more than present value receivable, it is a loss making business, don't do the business. ये break even point वाला भी point वहां लिखो. तो वहां एक बाजू पेएबल है और एक बाजू रिसीवेबल है. ये एक एप्लीकेशन हो गया. 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर की रिवीजन हो सकती है और 12 मार्क्स. 10 तो कहीं नहीं गए. 10 कहीं नहीं गए. क्या मानो 10 हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए गए. ओवर. Is that over? The another situation is that you have a proposal to pay cash down by the machine cash down or on installment annuity. तो यहां क्या होता है, एक मशीन आपको लेना है, उसकी सिंगल पेमेंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है. नहीं तो फिर वो डीलर बोलता है कि इंस्टॉलमेंट पे ले लो. दैट इंस्टॉलमेंट इज अगेन व्हाट? एक्स. एन दिया है, आर दिया है. And then we find the present value of that. So in every application of problem we have to find the present value. However, यहां फर्क ऐसा है कि ये दोनों भी पेएबल ही है. बिकॉज यू हैव परचेज दैट मशीन ना. तो इंस्टॉलमेंट पे दो या फिर सिंगल पेमेंट करो. बेसिकली इट्स पेएबल. नाउ whichever payable is smaller, whichever payable is lesser is preferred. दोनों प्रेजेंट वैल्यू में से जो भी कम है दैट इज प्रीफर्ड ऑब्वियसली. ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया. Over. As a third application, are you writing or what? As a third application, I consider I had the option of purchasing M1 and M2. M1 has some cost. M2 has some cost to be paid. But M1 has saving of labor cost. M2 also saves the labor.
Now this saves X per month, this says Y per month, some amount 1600 per month, ये सेव करता है 2200 per month, something like that. इसका जो मशीन का लाइफ है वो N1 years है, इस मशीन का लाइफ है N2 years. And cost of capital same RR, rate of interest. समझा? In that case what happens, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो. ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है सेविंग, एंड ये भी प्रेजेंट वैल्यू है व्हाट यू सेव. आता ये जो कॉस्ट था दैट वाज पेएबल. मशीन परचेस करने के लिए जो कॉस्ट तुमने बेयर किया था व्हाट इज पेएबल. तो फिर ये सेविंग minus cost is the profit, because saving is like earning. To save a money is to earn a money. Clear? Clear? And then whichever machine gives the larger profit is of course better choice of action. That's by common sense. Today you have got to be little fast. You have to understand survival of fittest, progress of fastest, and dominance of techiest. Techiest means techno-savvy. Means you have to be very fluent on calculation part of calculator. Then time problem will not be there. तो क्या स्लोगन ध्यान में रखना है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. मेंटली रिटार्डेड हो तो नहीं हो सकता. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, प्रोग्रेस ऑफ फास्टेस्ट. जितना फास्ट आप लिखेंगे ग्रास्प करेंगे. एंड द डोमिनेंस ऑफ टेकिएस्ट. दैट्स एन इंग्लिश वर्ड, टेकिएस्ट. That means one who is very techno savvy. Okay? Anyway. Fourth application is about the pension. तो यहां होता क्या है कि आपको पेंशन की टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाएगी. X per month, per quarter, per half year, whatever. Then you have life expectancy. You have life expectancy, that is N. Rate of interest applicable is R. And in lieu of this pension, in lieu means in place of this pension, what is the single value that is called single fund? That is nothing but the present value. So single value that you have to find is the fund value. So pension ki present value. So in any case you have to find the present value only. The one application is number what? 5. The one application is the valuation of bond. Now what happens in case of valuation of bond? You have a face value or the par value. Let's suppose 10,000. The rate of interest on that is suppose 10% per annum. Suppose it is a 4 years bond, but desired rate of interest, your desired rate of returns is suppose 15%. Then they will ask you what is the value of bond, at what price should it be sold by A,
to be. So in that case, what happens? 10% of 10,000 is 1,000. So you have 1,000, 1,000 for how many years? 4 years. And then after 4 years, your 10,000 rupees will be given back to you by the government. All right. So in that case, what will you do? Find the present value of this. That is equal to x over I. 1 minus 1 plus I raised to minus n. Now for this 10,000, it becomes a future value A. क्योंकि वो 4 साल के बाद मिलेगा. And there you have to use the formula A is equal to P into 1 plus R over 100 that raised to N. That means A over 1 plus R over 100 that raised to N, that is P. So ये भी तो present value ही हो गया. And then this present value plus this present value is the value of bond. इतना सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करो, ज्यादा सवाल मत तैयार करो. अभी मैकेनिकली क्या करना है वो देखो. एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालो. ये जो 10,000 जो पार वैल्यू मिलने वाला है उसको ए है वो, क्योंकि वो फ्यूचर में मिलेगा. उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकालो और दोनों प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करो. दैट्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड. इतना सिंपल. कीप इट सिंपल. यस. Over. Then you have the application number 6, and that is net present value NPV. Net present value NPV. Now suppose you start the business with the capital investment of, let us suppose, 1,000 rupees. It gives you 300 rupees in the first year. It gives you 450 rupees in the second year. It gives you 600 rupees in the third year. Rate of interest will be given, some rate of interest, suppose 10%. So that I will be equal to 10 over 100. That's 0.1. And then they will ask you what is the NPV. Is the business favorable? So all what you do is now, you consider the start as 0. 1 year, second year, third year. How many years are there? 3. Correct? Now, in the first year, what happens is that you pay whatever, 1,000. So negative flow, outflow. अभी first year में क्या होता है? You receive, so this is A, after 1 year you receive. So you receive that A of what? 300. You receive that A is 450 and you receive that A is of 600. ये सब A's है. But I know A is equal to P into 1 plus R over 100 that raised to N. So A divided by 1 plus R over 100 that raised to N is the present value. तो आपको करना क्या है कि ये सबकी present value निकालना है.
So in first case that present value is minus 1000 because it is paid. Here what will happen? It will be 300 that divided by 1 plus 10 over 100 that raised to 1 because ये 1 year के बाद है. This will be like 450 divided by 1 plus 10 over 100 that raised to 2, and this is 600. 1 plus 10 over 100 that raised to 3. Any number of years can be given. अभी ये चारों की total is called the net present value. Now if that is positive, then it is favorable. If it is negative, then it is adverse. It's loss making. Clear? ये जो सब एज आपको मिल रहे हैं ना, इनफ्लो जो हो रहे हैं वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद मिल रहे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है आज, क्योंकि 1000 रुपए आज देना पड़ा था. दैट इज कॉल्ड एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. Application number next is compound annual growth rate, CAGR. रब करूं? CAGR, compound annual growth rate. इसमें क्या होगा? Listen carefully. इसमें क्या होगा? You have first year, you have second year, you have third year, you have fourth year, something like that. यहां फर्स्ट ईयर के बाद आपको कुछ मिलता है पैसा, सेकंड ईयर के बाद कुछ मिलता है, थर्ड ईयर के बाद कुछ मिलता है, एटसेट्रा. सो फर्स्ट ईयर के बाद मिला 10%, सेकंड ईयर में मिला 15%, थर्ड ईयर में मिला कुछ ऐसा ही, एंड देन दे वांट अस टू फाइंड द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR. So in that case, suppose you want it from fourth year with respect to first year. समझा ना? Fourth year with respect to first year. In that case, what happens is that यहां जो वैल्यू थी, क्या समझो 2000 रुपए, that will be P. यहां जो वैल्यू है, suppose this is 1000 or suppose this is for 2300, then that will be A. N will be 4 minus 1. समझा ना? तो ये जो 10% 15% है, इसका एवरेज क्या है वो निकालना, मतलब CAGR निकालना. तो in that case what will you do? You know A, you know P, you have to find R, that is a CAGR, आणि N जो होगा वो होगा 4 minus 1, मतलब डिफरेंस. समझा क्या? दिस R जो आप ये तुमको पता है, ये पता है, ये पता है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, दैट R is CAGR. Very important concept because the whole financial analysis depends on these concepts of CAGR and all that, and earning per share and all that. You will learn it in the intermediate and final. Clear? The next one is perpetuity. Application is what? Perpetuity. The next application is of perpetuity. That is of perpetuity. Now this perpetuity comes in picture whenever you see the word forever.
whenever you see the word forever, perpetuity comes in picture when you have forever. In that case, you make an investment today, that is P. You receive some X forever. It could be per month, per quarter, per year, etc. And that divided by I. Now what happens, this X जो होता है वो प्राइस हो सकता है, ये X जो है वो स्कॉलरशिप हो सकता है, ये X जो है वो आपके सर्वाइवल के लिए रिटर्न्स हो सकते हैं. You make an investment today so that in your post-retirement life you will keep on getting this much amount every year or every month. समझा? So that is, so यहाँ होगा क्या? P will be given, X will be asked, और X will be given, P will be asked. But यहाँ एक और एप्लीकेशन आता है और वो होता है ग्रोइंग परपेचुइटी. That will be of growing perpetuity. मतलब क्या? मेरे को ये पता है कि मेरे को आज 1,00,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, आज मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया. पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में मेरे को पैसा चाहिए पर मंथ या पर क्वार्टर या जो भी है, लेकिन वहां इन्फ्लेशन के वजह से इन्फ्लेशन को बेकअप करना है, इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करना है, और इसलिए जो पैसा मेरे को मिलेगा उसमें भी ग्रोथ होना चाहिए ईयर बाय ईयर. समझा ना? तो दिस आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जी इज द रेट ऑफ ग्रोथ दैट आई डिजायर. ये इन शॉर्ट ये होगा इन्फ्लेशन रेट. समझा? महंगाई का दर. अभी in that case what P I have to invest will be P is equal to X upon I minus G. So for example, if rate of interest is 10%, then I will be 0.1 and the growth rate desired is suppose 4%, then G will be 0.04. तो 0.1 माइनस 0.04, 4% मेरे को हर साल बढ़ता रहेगा. जो मेरे को मिलेगा पेंशन या फिर जो भी रिटर्न्स कहेंगे आप, वो 4% से हर साल बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो मेरा इनकम भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो आई विल गो ऑन बिकमिंग पुअर एंड देन आई विल हैव टू कम टू योर होम, प्लीज गिव मी फूड. So I will have to fly and come to you, give me the food. Is that clear? Okay. And the last point here is the annuity due. Last point, huh? That is annuity due. Annuity due or annuity immediate. And when do we use this? Whenever they say from today. Whenever they say from today, ऐसा वर्ड आएगा तो वो एन्यूटी ड्यू होगा. Now what happens is that in that case P for that immediate annuity is P for that regular annuity, what we know, multiplied by 1 plus I. What it means is that this is equal to X over I, 1 minus 1 plus I raised to minus n into 1 plus I. And then A for immediate is A for regular into 1 plus I. What it means is X into 1 plus I, that over I, 1 plus I raised to n minus.
In short, what I have done is 1 plus I से multiply किया. I not done in short. I written at length. Over. I take a few questions and look at me for them. A man invests. Look at me now. Stop talking. A man invests 15,860. कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के मेरे को लगा कि थोड़े अलग है, वो लिया है. बाकी तो सब रूटीन क्वेश्चंस होते हैं. ये रिवीजन का एक कितनी ऑलमोस्ट 1 hour and 10 minutes or so. ये जो हमने किया है दैट इज कॉम्प्रहेंसिव, दैट इज इनफ. बट ठीक है, थोड़ा वर्डिंग में स्विच कैसे होता है. मैन इन्वेस्ट amount of 15,860 in the names of his 3 sons ABC. They get the same amount after 2, 3, 4 years respectively. Rate of interest is 5%. Ratio of okay. Then the ratio of amount invested in the name of ABC is. Will you try? हम सिर्फ क्या करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे. हाँ, ऐसा लगा कि कंफ्यूजन है तो फिर करेंगे. बट एट प्रेजेंट वी जस्ट डिस्कस. 15,860 is the total amount that is divided. उसमें से A को कुछ पैसा मिलेगा, B को कुछ पैसा मिलेगा, C को कुछ पैसा मिलेगा. A को मिला X, वो उसका P हो गया. B को मिला Y, वो उसका P हो गया. और C को मिला Z, वो उसका P हो गया. समझा? They receive the same amounts in the future. So A is equal to. Only thing is that the rate of interest, yeah, compound interest or simple interest, that should have been given. This is the problem because these problems are being collected by memory. मेमोरी बेस्ड है ना प्रॉब्लम, पेपर डिस्क्लोज होता नहीं है. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है. तो हम क्या सिंपल इंटरेस्ट लेके चलते हैं. सपोज जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए से फॉर्मूला बदलेगा. तो फिर क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एन आर ओवर 100. तो ए के लिए क्या होगा, ए इट विल बी एक्स, उसका एक्स है 1 प्लस 2 इंटू 5 ओवर 100 शुड बी इक्वल टू वाई. इसके लिए 3 years है, 3 इंटू 5 ओवर 100 इज इक्वल टू जेड इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 4 इंटू 5 ओवर 100. ज्यादा डीप में कैलकुलेशन मत करो, सिर्फ हिंट्स ले लो क्या है. तो मतलब जब क्वेश्चन ऐसा ट्विस्टेड होता है तो भी पेशेंस नहीं छोड़ना है.
अपने को वो करना है, एक स्टेप लिखेंगे तो दूसरी स्टेप आती है उसमें से। तो फिर क्या हो गया, 1.1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.15 इंटू वाई, और forget, even you can write like this, it will be 11 upon 10 of x is equal to 15 upon 10 of y is equal to 12 ना, किती 22, 20 upon 100 ना रे, तो 120। सो कुछ गलत हो गया क्या, 1.1 ये हो गया था, ये 1.15 हो गया था, तो ये 100 होना चाहिए। वन करो ना तो काय बर का, ये हो गया 1.20, 1.20 का मतलब 12 अपॉन 10, 1.15 का मतलब 15 अपॉन 100, समझा ना, आणि दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 10 ऑफ जेड, ऐसा ही होगा ना। अरे 1.1 म्हणजे 11 अपॉन 10 नाही का, हाँ 1.15 मतलब 115 ओवर 100, ये समझा। तो ठीक है, अभी 10 10 कैंसिल होगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110x इज इक्वल टू 115y इज इक्वल टू 120z। इज दैट क्लियर बाळांनो, ये समझा क्या तुमको, इज दैट क्लियर। कुछ तो कहो। नाउ ये तीनों की टोटल आपने को पता है 15,860, so x plus y plus z is 15,860, so you can put z in terms of x and y, you can put x in terms of y, so तीनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तीनों को क्या करना है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या, तो यू कैन से सबको x में लाया, तो इसका मतलब हो गया कि 110 over 120 of x is z, and 115 rather 110 over 115 of x is y, z is put in terms of x and y is put in terms of x, समझा ना। and then you know x plus y plus z, that is equal to what, 15,860, so it will be x plus 110 over 120 of x plus 110 over 115 of what, x only ना, x, that is equal to 15,860। तो तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी, x मिलेगा तो y मिलेगा और z भी मिलेगा, तो फिर x अपॉन x इज टू y इज टू z मिलेगा तुमको, समझा ना। वी आर जस्ट डिसाइडिंग द प्लान ऑफ एक्शन, आपको बाद में सॉल्व करना है तो आई सेंड यू दिस प्रॉब्लम्स, ओके। हाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, आई सेंड यू दिस प्रॉब्लम्स टू यू एज अ पीडीएफ, समझा। सॉल्व करो, समझा क्या मैंने क्या किया, y was put in terms of x, z was put in terms of x, फिर तीनों में x हो गया, तो इसकी टोटल है 15,860, तो x मिल गया, x मिल गया तो y मिलेगा और z भी मिलेगा, फिर x is to y is to z, सिंपल है, समझा। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, देन second question, effective rate of interest does not depend on, वो हमने ताजा ताजा लिखा है, हाँ, a person wants to lease out a machine costing 5 lakh, it has a fixed rental of 51,272 per annum payable from the first year end of, suppose the rate of interest is 10% compounded annually, to whom is the agreement favorable। ये क्वेश्चन आया था जून 2019 में। अभी तुम क्या करेंगे, एक बाजू है तुम्हारे पास 5 लाख रुपीस की, ये पेएबल है,
अभी दिया है ना ताजा ताजा। और फिर यहाँ क्या होगा कि ये 51,000 जो भी दिया है 272 इज x, n इज इक्वल टू कितने ही साल के लिए है 10, I इज इक्वल टू 10/100 मीन्स 0.1। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो रिसीवेबल है। समझा क्या? अरे ये रिसीवेबल है। अभी ये रिसीवेबल 5 लाख से ज्यादा होता है तो इट इज फेवरेबल टू द, उनको जो चाहिए वो लेना चाहिए ना। लेजर यारे हो के नहीं, लीज जो करता है उसको है, मतलब वो कंपनी को है। और ये पेएबल ज्यादा आता है तो वो लॉस मेकिंग है फॉर द कंपनी लीजिंग इट आउट, तो वो लीजी के लिए वो फायदेमंद होगा। समझा? लीजर और लीजी समझता है ना तुमको? जो देता है वो लीजर होता है, जो लेता है वो लीजी होता है। So my dear leasers and leases, कुछ देने वाले कुछ लेने वाले। बट लीजर्स का नंबर 1 से बढ़ेगा क्योंकि मैं भी तो देने वाला ही। Is that over? ये रूटीन क्वेश्चन था। That was not a twisted question. It was a simple question. Now, fourth. Well, well. कुछ तो गड़बड़ है लेकिन आई थिंक दैट इज P इंटू आई स्क्वायर इज 96, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। P इंटू आई स्क्वायर इज 96 बट R दिया है 8%, तो I क्या होगा 0.8 ना। तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर मिलेगा 0.64। सो P इंटू 0.64, ये 96 करके देखो, 96 अपॉन 0.64 आता है क्या देखो, 15,000 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये थोड़ा सा करेक्शन, ये 96% होना चाहिए, नॉट परसेंट 96, इट्स 96%। तो आता है, सोपा है ये भी क्वेश्चन। आई की वैल्यू दी है, पी निकालना है, ये तो क्या मामूली क्वेश्चन है। लुक एट दिस, सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 2000 and the rate and time are roots of the squares of, see this is what I'm saying. I have collected those questions which I feel are little different. समझा? क्या दिया है देखो, the rate and time are the roots of this equation. अतः ये क्या है, दिखने में डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में अगर मिला तो, पर है बहुत सिंपल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर तुमको दो वैल्यूज मिलेगी, उसमें से एक होगा रेट और दूसरा होगा टाइम। ये समझा क्या तुमको? किसी एक को टाइम कहो, किसी दूसरे को वो रेट कहो, बता लो, एंड देन यू वांट समथिंग। तो टेल मी एक्स स्क्वायर, इसके रूट्स क्या हो गए 6 and 5 ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू आइदर 5 और x इज इक्वल टू 6। तो मैं कहूंगा r इज 5, n इज 6, कुछ भी कहो, उल्टा भी कर सकते हैं। अभी क्या दिया है बोलो, in the simple interest, if principal is this rate and these are roots of this, what is the simple interest? So what is the formula for the interest? P कितना दिया है 2000, n और r है 5 and 6, that divided by 100, तो जो आएगा वो आंसर होगा, 600 is the answer. हाँ, अभी what makes it different? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है, ये सिर्फ समझने की बात है, नहीं तो यही सरेंडर कर देते हैं। अरे बाप रे, ये इक्वेशन चैप्टर यहां कहां से आ गया? Why I am taking these questions? Because I want you to, एक बात है ना, एक मिनट,
एक बात 100% कॉन्फिडेंटली पहले उसको कंसीव करो, क्या जो हमने क्लास में लिया है उसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है. दिस इज टैगलाइन. हाँ, अभी थोड़ा ट्विस्ट होता है तो भी वो ट्विस्ट तुमसे मैनेजेबल है. सिर्फ देखने में अपीयरेंस डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसके पास उसके साथ तुम पॉजिटिवली देखेंगे, एग्रेसिवली देखेंगे, तो फिर वो पॉसिबल होगा. समझा क्या? हाँ, लुक एट दिस. Man invests 12,000 at 10% per annum and another sum of money 20% per annum for 1 year. Okay? The total investment earns 14% per annum. Simple interest on total investment is. अभी उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया क्या है कि 12,000 वो करता है 10% से, और कुछ अमाउंट है जो पता नहीं है, कुछ अमाउंट है वो 20% से करता है, एंड टोटलिटी में उसको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. समझा क्या? तो दे आर आस्किंग यू द टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब 12,000 प्लस क्या. तो फिर होगा क्या इस केस में? टेल मी क्या होगा? इट विल बी 12,000, बराबर ना? 12,000 into 10 into 1 divided by 100. ये हो गया इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट सम. सपोज मैंने कहा x इधर है, इंटू 20 इंटू 1 ओवर 100, ये इंटरेस्ट ऑन द सेकंड हो गया. तो फिर दिस प्लस दिस, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया. समझा ना? एंड दिस टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अभी टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हो गई 12,000 प्लस एक्स की, इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, और वो 14% मिल रहा है टोटलिटी में, इंटू 1 ओवर 100. ये समझा क्या भाई? टोटल इंटरेस्ट जो है, दैट टोटल इंटरेस्ट इज 14% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. तो क्या तुमको एक्स की वैल्यू निकालना है सिर्फ. बेसिकली तो ये 100 कट हो जाएगा. ओके, दोनों बाजू का. क्या है तो क्या है, सोप है. आणि देयरफॉर ये होगा लाइक दिस 1,20,000 प्लस 20x इज इक्वल टू, आता ये 14 इंटू 12,000 कितना होता है देखो, आणि मग 14 इंटू एक्स होगा. निकालो काय तो काय. समझा क्या? कुछ अलग लुकिंग क्वेश्चंस आई एम टेकिंग. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू बूस्ट योर मोरल. कॉन्फिडेंस लेवल को हमें शूट करना है कि ये हमसे होने वाला है. दिखने में अलग दिखता है पर हमारे लिए मुमकिन है. समझा क्या? हम है तो मुमकिन है. क्या है? जहां बाकी टीचर्स के बारे में का कॉन्फिडेंस खत्म होता है, वहां जीबी जोशी की गारंटी शुरू होती है. आता काहीतरी काहीतरी बोलायचं तर काय. ऐसा ही बोला था ना मोदी जी ने परसों. हो गया कि कितना आया? 8,000 आया क्या? हाँ, वेरी गुड. तो फिर यह 7वां क्वेश्चन. डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, प्लीज. डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, sum invested of rupees 15,000 is 18. Difference in their rates is. Difference in simple interest rates. एक का R1 कहो, एक का R2 कहो. रेट्स नहीं दिया है ना,
तो एक रेट को कहो R1 या फिर X कहो Y कहो, कुछ भी कहो, तो फिर क्या होगा मेरे को बोलो. 1500 multiplied by 3 multiplied by R1 over 100 minus 1500 multiplied by 3 multiplied by R2 over 100, that is given to be 18. Mind well, it is not the difference between compound interest and simple interest. एक इन्वेस्टमेंट में R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक में R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो डिफरेंस जो इंटरेस्ट आता है वो दिया है. तो इसका मतलब क्या हो गया? 45 कितनी 450 R1 माइनस बोला कि 450 1500 दिया है. ओके, सो 45 R1 माइनस 45 R2 इज इक्वल टू 18. तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 18 ओवर 45, जो भी आता है. असू दे. काय कौतुक आहे का? 18/45. ये नहीं. ठीक है, तो फिर इसे करो. मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ कैपिटल एट 7%. इट्स अ गुड क्वेश्चन. 1/3 ऑफ कैपिटल एट 7%, 1/4 ऑफ कैपिटल एट 8% एंड रिमाइंडर एट 10%. ते रिमाइंडर नसतं, वो क्या है? रिमाइंडर. व्हाट रिमेन्स? 10%. Annual income is 561. Then the capital is what? तो हमने सपोज कैपिटल को x कहा. कैपिटल को क्या कहा? x, टोटल अमाउंट. तो फिर 1/3 ऑफ x बराबर ना, इज एट 7%. 1/4 ऑफ x इज एट 8%. अभी रिमेनिंग कितना है? आम्हाला कुठे याचं कसं काढणार? अरे ये टोटल है कि नहीं, और फिर x में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा. तो क्या है? तो ये 4 + 3 7 7/12 होता है कि नहीं? तो इट विल बी x माइनस 7/12 ऑफ x. तो इट इज 5/12 ऑफ x. ये रिमाइंडर है. दैट इज इन्वेस्टेड एट 10%. हाँ, आणि मग देयर पर क्या होगा कि 1/3 ऑफ x into 1, because annual income है ना, and that multiplied by 7, that divided by 100 plus बोलो 1/4 of x into 8 into 1 over 100 plus 5/12 of x into 1 into 10 over 100. इस सबकी टोटल दी है 561. टोटल इनकम बोला है ना, इनकम मतलब इंटरेस्ट. तो क्या है? तो वो करना है तुमको. तो फिर 7/3 इंटू एक्स प्लस 2x, करेक्ट ना, एंड प्लस किती 50/12 ऑफ x इज इक्वल टू 561 इंटू 100 मीन्स 56. तो तुमको x की वैल्यू निकालना है. 6600 आता है क्या? तुमको समझा ना मैंने क्या किया? 1/3 गया, 1/4 गया, तो रिमेनिंग 5/12 है. तो फिर क्या, तीनों का इंटरेस्ट की टोटल है 560 का 561 x मिला. समझा ना तुमको? तो कभी कभी क्वेश्चंस लुक डिफरेंट
बट एक्चुअली दे आर नॉट. ये 8वां क्वेश्चन देखो. इस तरीके से तुम करेंगे क्या? अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन की तरफ देखो. 12वें क्वेश्चन की तरफ. I is actual rate of interest in decimal. N denotes the number of conversion periods. Conversion period मतलब मंथ क्वार्टर वगैरह. कन्वर्जन पीरियड का मतलब ही मंथ्स है, क्वार्टर्स है, हाफ ईयर्स है. देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? यहां मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यू में आता है तो ये, क्योंकि यहां ईयर्स नहीं दिया है तो 1 ईयर का एजम्पशन है. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय 2 ईयर्स 3 ईयर्स है तो फिर ये नहीं चलेगा. तो फिर तुमको ईयर, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा. इतना ही ध्यान में रखो, एन से डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या चॉइस है? वो क्या ही है मार्क उधर. हाँ, ये 13 क्वेश्चन. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट इज सेम एज. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन है. थोड़ा सोचो. आई लीव इट टू यू टू ट्राई. आई लीव इट टू यू टू थिंक. कम ऑन, थोड़ा सोचो, बाद में बोलो मेरे को. गुड क्वेश्चन. सोचो ना क्या कहेंगे. देखो मेरे तरफ. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट. इमीडिएट का मतलब क्या करना है तुमको? बिगिनिंग से करना है. क्या करना है? वो जो भी पेमेंट वगैरह करना है, इंस्टॉलमेंट भरना है, वो बिगिनिंग ऑफ मंथ से करना है या बिगिनिंग ऑफ ईयर से करना है. एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 years प्लस इनिशियल रिसीट इन द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड. एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 years. इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्यों मैं कंसेप्चुअली पढ़ाता हूँ उसका रीजन आपको समझेगा. ये इमीडिएट एन्युटी का जब एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में दिया था तो आपको इसमें मैंने बताया था कि ये क्या है. देखो मेरी तरफ. यहां स्टार्ट हुआ, यहां ही 100 रुपीज भर दिया. समझा? दिस इज बिगिनिंग. ये 0 है बिगिनिंग. यहां पहला मंथ खत्म हो गया या पहला ईयर खत्म हो गया तो यहां तुमने 100 रुपीज भरा भर का. फिर यहां सेकंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड शुरू हो गया तो यहां फिर 100 रुपीज भरा. ये 0 है, ये 1 है, 2 है वगैरह. बराबर. ऐसा करते करते समझो हम ऐसा पकड़ के चलेंगे कि 5 साल का समय है. तो ये एक ईयर हो गया, ये दूसरा ईयर हो गया, ये तीसरा ईयर हो गया, ये चौथा ईयर हो गया, ये 5वां ईयर हो गया. अभी 5वें ईयर के बिगिनिंग में भी वो 100 रुपीज भरेगा और फिर यहां कुछ नहीं भरेगा. भरेगा. तो अगर आप अभी इसको रेगुलर के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा? रेगुलर के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा कि तुमने ये पहले 100 को बाजू को रख दो. समझा क्या? तो एक ईयर होने के बाद 100 रुपीज भरा, दूसरा ईयर होने के बाद 100 रुपीज भरा, यार होना की तीसरा ईयर होने के बाद 100 रुपीज भरा और चौथा ईयर होने के बाद 100 रुपीज. तो दिस इज व्हाट यू गेट हियर इज द प्रेजेंट वैल्यू है कि नहीं. व्हाट इज यू गेट इज द एन्युटी फॉर ओनली 4 years. What you get is annuity only for how many years? 4 years. आणि मग इनिशियल ये जो 100 रुपीज मैंने छोड़ा था वो भी तो है ना. तो कौन सा चॉइस करेक्ट हो गया? फर्स्ट चॉइस करेक्ट हो गया. ये समझा क्या बाळांनो?
पहला वो छोड़ दो कि जो पहले ईयर के बिगिनिंग में भरा था उसको छोड़ दो, तो आगे क्या होगा? फर्स्ट का एंड, सेकंड का एंड, थर्ड का एंड, फोर्थ का एंड, तो 4 ही पीरियड हो गए। आणि प्लस 100 रुपीज भरा था वो, समझा? ये समझा क्या? दिस इज गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये बाकी लोगों से होगा नहीं, तुमसे होना एक्सपेक्टेड है। करो अब भाई बाळांनो, 14 क्वेश्चन एक करा पटकन। सर्टन अमाउंट, some amounts to this in 3 years simple interest R%, same sum amounts to this at R plus 2% simple interest at the same time, what is the value of R? तो फिर अभी जरा मेरे तरफ देखो, होता क्या है कि एक ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है कि नहीं, तो R% से अमाउंट्स टू कितना हो गया? 15,748, और R प्लस 2% से कितना हो गया? 16,510। तो जो डिफरेंस है 16,510 माइनस 15,748, ये जो डिफरेंस है वो 2% के वजह से हुआ है, एक्स्ट्रा 2% के वजह से हुआ, आर एंड आर प्लस 2। तो ये आर को भूल ही जाओ ना, तो वो डिफरेंस जो है वो 2% के वजह से हुआ है, यार हो बना, आणि मग वो आर तुम्हें अपने आप मिलेगा, समझा क्या? वो जो आर है वो अपने आप तुमको मिलेगा, समझा क्या तुमको? क्यों क्या? नहीं तो फिर ऐसा करो, ये डॉक्यूमेंट नहीं करो, देखो 15,748 इंटू 1 प्लस 3 इंटू आर ओवर 100। अब ये मैंने ये फॉर्मूला क्योंकि अमाउंट्स टू बोला है ना, प्लस बर का अमाउंट्स टू बोला है, तो ये P है, और फिर P 1 प्लस कितनी 3 है ना पीरियड, R प्लस 2 ओवर 100, ये समझा क्या तुमको? आणि ये जो है सेम टाइम बोला है, तो पीरियड सेम ही है, ओके? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? तो अमाउंट्स टू दिस मतलब ये वैल्यू दी है 15,748, और ये वैल्यू दी है व्हाट 16,510। ये प्लस करने की जरूरत नहीं, ये ऐसा है, समझा क्या तुमको? तो फिर रेशो लेंगे तो पीपी कट होगा, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करेंगे तो पीपी कट होगा, फिर आर की वैल्यू मिलेगी, है क्या? Why I'm taking only these questions? Because same again simple interest निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन करने में मजा नहीं है ना, अभी थोड़ा अलग क्या है, करेंगे क्या ट्राई? आई एम टेलिंग यू टू टेक द रेशो। यू कैन टेक द रेशो बाळांनो, और फिर तुमको आर मिलेगा। मैं तुमको सिंपल टेक्निक बताऊं क्या? आर है बघा 2% से पकड़ के चलो, वो डिफरेंस होगा, उसमें से तुमको पी मिलेगा, और पी की वैल्यू पहले इक्वेशन में डालेंगे तो आर मिलेगा। इल्ला कुछ नहीं समझा, अरे बावड़ेट, है बघा, देखो मेरी तरफ, हाउ विल आई डील विद दिस? नहीं तो सिंपल है ना, आंसर टू क्वेश्चन करो। आर अगर 10% है तो 1 मिनट थमा, आर को मैंने 10% से लिया, तो फिर कुछ पी 1 प्लस 10 इंटू 3 मतलब 30 ओवर 100 शुड बी इक्वल टू 15,748, समझा क्या? तो इसमें से P निकालो, फिर P 1 प्लस आता 10 प्लस 2 12 होगा, 12 इंटू 3 36 होगा, दिस इज इक्वल टू 16,000 काहीतरी 510
इसमें से P निकालो, ये दोनों भी P सेम आ गए तो दैट चॉइस इज करेक्ट, और ये दो P सेम नहीं आए तो B चॉइस ट्राई करो. दैट्स अ सिंपल वे आंसर टू क्वेश्चन. बहुत सारे वेज हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के, बराबर ना. आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन यू गेट मैरिड यू विल एक्सपीरियंस कि वाइफ को प्लीज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक गजरा लेके आओ, एक साड़ी लेके आओ, लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है वाइफ को प्लीज करने का, कि उसके मम्मी को साड़ी दो. तो वो जितनी खुश होगी वो साल भर फिर प्रॉब्लम नहीं आता. समझा क्या? ये भी तुम थोड़ा सीए बन जाओ, कुछ कुछ टिप्स हम देंगे आपको. नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते एवरी डे आई टीच फॉर 11-12 आवर्स, इतना टाइम बाहर रहना ये मुश्किल ही है ना. बीबी चिढ़ेगी ना, तो कुछ ट्रिक्स ऐसे यूज करनी पड़ती है. कौन से चॉइस में? काय म्हणली? नहीं, वो थोड़ा सा फर्क इसलिए हो सकता है कि शायद कैलकुलेशन का डिफरेंस हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन का. तो दैट्स ओके. समझा क्या बाळांनो? हाँ ठीक है. तो फिर लेकिन टेक्निक समझा क्या? टेक्निक समझा क्या? हाँ, ये CAGR निकाल सकते हैं क्या तुम? अभी बोला है ताजा ताजा. ये CAGR तुम निकाल सकते हैं क्या? कौन से ईयर के लिए बोला है? ईयर 6 विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 2. मतलब ये तुम्हारा P हो गया, ये तुम्हारा A हो गया, और फिर N कितना हो गया? 6 - 2 विच इज 4, और फिर तुमको R निकालना है. दैट इज CAGR. समझा क्या? यारे कळलं का बाळांनो? भारी की नहीं? अरे कैलकुलेशन मत करो, तुमको क्या करना है वो समझा क्या? ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम आने वाला है, इसके जैसा प्रॉब्लम आने वाला है. तो मगअप करेंगे ये फिगर्स को. हो गया क्या? हाँ, यहां देखो NPV निकालना है 15 सब में, तो क्या करेंगे? बोला कि ये NPV निकालना है तो क्या करेंगे? इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R ओवर R कितना दिया है? 12%. तो 60 डिवाइडेड बाय 1.12 ये इसके लिए हो गया. फिर 40 डिवाइडेड बाय 1.12 ये इसके लिए हो गया, और 50 डिवाइडेड बाय 1.12 ये इसके लिए हो गया. ये सब प्रेजेंट वैल्यूज हो गई तीनों साल की. उसकी टोटल -1 किती 100. तो ये तुम्हारा NPV होगा. जो पॉझिटिव्ह आया तो आता काय तर काय.
अभी समझा क्या तुमको बयानो? एंड बिकॉज दिस फिगर्स आर गिवन इन थाउजेंड्स, ओके, तो फाइनली आंसर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1000. नहीं तो बोलेंगे इतना फिगर, बड़ा फिगर कहां से आ गया, 60 रुपीज ही मिलता है तो क्या? तुम कब बड़े होगे? यहां भी CAGR निकालना है, वो ठीक है. हाँ, इधर देखो. इफ अ पर्सन बॉट अ हाउस, एक मिनट, पर्सन बॉट अ हाउस by paying 45 lakh down payment. 45 lakh is what? वो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट नहीं. 80,000 at the end of each year till perpetuity, मतलब इंफिनिटी. परपेचुइटी मतलब इंफिनिटी. तो अभी मेरे को बोलो कि प्रेजेंट वैल्यू का परपेचुइटी के केस में फॉर्मूला क्या है? x अपॉन आई. तो यहां x दिया है 80,000 डिवाइडेड बाय i क्या है? 0.16, करेक्ट ना यार, हो कि नहीं? तो ये p मिलेगा. तो ये कितना आया? 5 लाख. और पहले 45 लाख दिया है ना, तो टोटल हाउस क्या प्राइस क्या हो गया? सिंपल है, देखो. तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन अभी यहां क्या हुआ है, मैं तुमको 45 लाख दूंगा अभी, फिर हर 45 लाख फटके म्हटलं मी. और फिर हर साल के बाद 80,000 दूंगा फॉर एवर. समझा क्या? तो फिर तो घर मेरा हो गया. समझा क्या तुमको? ऐसा वो गेम है. तो जनरली 80,000 ऐसा फॉर एवर नहीं बोलते है ना, 5 साल 10 साल 15 साल. अभी यहां बोला है तो अलग है कि नहीं क्वेश्चन कुछ? हाँ, काय होतंय का? तो ये अच्छा है ना प्रपोज करने के लिए किसी गर्ल को, कि मैं तेरे को अभी 45 रुपीज देता हूँ, फिर भरने तक हर साल इतना पैसा देता हूँ, तू मेरे से शादी कर. ये परपेचुइटी हो गया. समझा क्या? अब करेंगे क्या तुम अभी? ये क्वेश्चन मैं भेजूंगा तुमको. हाँ, आई विल सेंड यू दिस क्वेश्चन, दिस PDF, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेकिन ये लेने का रीजन क्या था? रीजन एक था, एक मिनट है प्लीज. रीजन ये एक ही था कि कुछ अलग दिखा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, पैनिक की क्रिएट करने की जरूरत नहीं. हाँ, थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो फिर वो पॉसिबल है. हाँ, लेकिन इनकम मतलब इंटरेस्ट होता है, और जो टोटल अमाउंट मिला है वो मतलब ए होता है, ये ध्यान में रखो. बस CAGR हो, NPV हो, बाकी कुछ हो, बाकी वो तो एकदम मैकेनिकल क्वेश्चंस रहते हैं. सिर्फ जो आज 1 घंटे की रिवीजन ली उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो. समझा? तो टाइम वैल्यू के 12 छोड़ दो, लेकिन चलो और 2 छोड़ दो, और 2 छोड़ दे, 8 मार्क तो मिलेंगे. समझा ना तुमको? हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक मिनट. इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये 100 क्वेश्चन सब मिक्स शफल्ड क्वेश्चन होते हैं. तो पेपर हाथ में आएगा तो तुम क्या करेंगे? पूरे पेपर की तरफ नहीं देखने का, ढूंढो टाइम वैल्यू के प्रॉब्लम्स कहाँ है, वो सॉल्व करो. 1 मिनट, मैं तुमको तरीका बता रहा हूं. अभी अभी इसके बाद ज्यादा हम मिलने वाले नहीं है, ब्रेकअप होने वाला है अपना. बर का. तो अभी जाते जाते मैं आपको कुछ चीजें बोलने वाला हूं. एक एक मिनट प्लीज. नहीं, सीरियसली. एक HB की पेंसिल यूज करना है. नहीं, कहा जाओ, कॉमनली ऑब्जर्व मिस्टेक्स, आई एम नॉट सीरियस नाउ. बाद में रोने से कुछ नहीं होता है. वो जो OMR का जो सर्कल होता है, उसे अगर तुमने ऐसा सिर्फ ऐसा ऐसा कुछ किया कि जिसमें हॉलो स्पेसेस शिल्लक है, बाकी है, तो फिर वो OMR पढ़ता नहीं है. फिर वो, 1 मिनट, अरे स्टॉप टॉकिंग.
तो फिर वो क्वेश्चन वो पढ़ नहीं सकता है, तो फिर वहां तुमको 0 मार्क्स मिलता है। तो डार्कनिंग शुड बी प्रॉपर. Second strategy should be you decide, that is individual's convenience. फॉर एग्जाम्पल मैं एमसीटी एमडी के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करूंगा. चैप्टर डिसाइड करो तुम्हारा प्रेफरेंस का क्या है, फिर उसके 100 में क्वेश्चंस कहां कहां दिखते हैं वो सॉल्व करो. वो होने के बाद दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कहां कहां दिखते हैं वो सॉल्व करो. प्लीज डोंट गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, गो चैप्टर बाय चैप्टर. क्योंकि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे स्विच होना इतना आसान नहीं होता है कि एक क्वेश्चन टाइम वैल्यू का किया और दूसरा एकदम कोरिलेशन का आ गया, तो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे स्विच होना ये ये आसान नहीं होता है. तो चैप्टर्स के क्वेश्चंस ढूंढो, सब 100 क्वेश्चंस मत ढूंढो, समझा. फिर सेकंड क्या होता है कि समझो तुमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया है, तो 16 का डार्कनिंग 16 के सामने ही होता है कि नहीं वो देखो. कायत्री बाबा सर, अगर वो 16 का 15 के सामने हो गया है तो पूरा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा. मैं ये दोनों सब्जेक्ट के लिए बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए भी. समझा क्या? वो जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो ऐसा स्केल रखो उस पर कि ये इसका आंसर है, और फिर वहां मार्किंग करो, नहीं तो आंखें घूमती है. ये दूसरी बात हो गई. तीसरी बात, 1 मिनट. तीसरी बात, पड़ोस वाले की कॉपी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर एक का सेट अलग अलग, क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन शफल होते हैं, तो सेट अलग होते हैं. नाही ते बावळ सारखं शेजारची कॉपी कराल, तुमचा पेपर वेगळा आहे त्याचा वेगळा आहे. ऐसा नहीं होता है क्या, ऐसे को उल्लू मत समझो. अभी ये तीसरी बात. चौथी बात, जो भी सेट आपको दिया गया है उसका वो कोड लिखना पड़ता है वहां, एबीसीडी जो भी है 1 2 3 पर जो भी बोलेंगे वो लिखने का भूलो मत. तुम्हारा नंबर जो है, रोल नंबर क्या है, सीट नंबर जो भी क्या है, एग्जामिनेशन नंबर, वो वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है. तुमको आता है क्या 16,571, ये वर्ड्स में लिखना आता है क्या? वो प्रैक्टिस करो. नहीं तो क्या होता है कि 1400 में FOUR लिखने का है या FOR लिखने का है गड़बड़ है ना. 14 में FORTEEN लिखना है, FOURTEEN लिखना है, 45 में क्या लिखना है, गड़बड़ हो जाता है. तो फिर वही कॉन्फिडेंस जाता है. तो तुम्हारा रोल नंबर वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करो. And I'm not joking, it sounds like joking, but it happens. तो काय इज दैट क्लियर? हाँ. तो अभी एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे. उस 10 मिनट के ब्रेक के बाद तुरंत कोरिलेशन को स्टार्ट करेंगे. ओके? काय प्रॉब्लम? अभी भूख लगनी है तो सिर्फ ज्ञान की भूख लगनी चाहिए. भूख किसकी लगनी चाहिए? ज्ञान. अभी शरीर की भूख और प्यास की कोई अहमियत नहीं है. बट ठीक है, ठीक है, क्या तुम बोलो. अभी मेरे यहाँ आईपैड के 12 बज गए हैं, तो 12:30, 12:30 बजे को रिलेशन वो खत्म करेंगे, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन.
Chalo बाळांनो, come back. Come back. It's exact 12:30 and we are going to start. सर अटेम्प्ट झाला व डिसेंबर अटेम्प्ट हां 6ला संपला. तर तुम्ही किती सिरियसली बोलत आहे जसं की पाठवतच आहे. नको नको. तुम्ही पण येणार आहे का? तुम्ही खरंच चालले? तर आता इंट्रोडक्शन द्यायला लागेल ना कोणीतरी. मी थोडी ओळखते. हो का? एकटेच जाणार आहे? तसं नाही सर, तुम्ही पण असं सोबतीला कोणी सोबत जाते मग मी. कोणी लागेल ना म्हणून जाते मी पण. कोणी लागेल ना सासूबाईला माझ्यासोबत म्हणून मी पण जाईल म्हटलं. थंडी असेल ना तर ते कपडे घ्यावं लागेल सर. माझ्याकडे थंडी एवढं का? एवढे थंडीचे कपडे नाही सर माझ्याकडे. मिठी मारली की ते गरम गरम. सासूबाईला मारेल. हो सर, पण सर मला मॅथ्सला टाईम नाही पुरला एवढा याला. फर्स्ट रिव्हिजन चांगलं सर. अटेम्प्टच नाही झाले. 75च अटेम्प्ट झाले. जर का बाय चान्स थेरी ज्यादा आली श्रद्धा झालेलं ना सर. आम्ही तुम्हाला 3दा विचारलं येणार का आमच्यासोबत. पण आम्ही तुम्हाला आणू काय सर आत्ताच आवणार. सर पण तुम्ही माझ्याशी फ्रेंडशिप केलेली ना सर. पण आहे ना मग आता परत दुश्मनी का बरं. नाही मला तुमच्याशीच करायची. इथे पॉइंट इथे कोणाशी फ्रेंडशिप करून काय फायदा. नाही बेबी गर्ल.
हे आता ते सांडलंय ते राहू दे, आता काढू नको ते. नाही तर सांडलंय अंगावर म्हटलं सगळं काढून मोकळं. चलो बाळांनो, नाउ आई वॉन्ट योर अटेंशन. 1 मिनिट, कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं. स्टॉप टॉकिंग. We are on last meet of marathon. So you have to be matured enough now. We are going to start with 4 marks, 5 marks, whatever. And because June 2023 attempt, theory less, problems more. This time, it could be theory more, and that's an advantage. Time point of view, it is an advantage. We are going to start with correlation and regression. Quickly, we will have the revision in first 15-20 minutes, and then we will solve the problems based on that. Stop talking. अगर आपको चाहिए तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मेरा आपसे वादा है कि एटलीस्ट इन स्टैटिस्टिक्स सेक्शन जो हमने किया है उसके अलावा 100% कुछ भी अलग आने वाला नहीं है. 100%. Look, three, countdown starts. 3, 2, 1. The variables are said to be correlated. अगर आपको आपके मोबाइल पे रिकॉर्ड करना है तो करो. Because I am going to write less and review more. पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, लेकिन मेरे को बीच में कभी भी ऐसा लगा कि यू आर बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, आई स्टॉप दिस लेक्चर्स. Look, the variables are said to be correlated if they change together. Means change in one causes change in other. Type or nature of correlation means positive means direct, negative means inverse. They are positively correlated if both change in the same direction. Rise in one causes rise in other. Fall in one causes fall in other. Rise, rise, fall, fall. They are negatively or inversely correlated if they change in the opposite directions. Rise in one is associated with fall in other, and vice versa. Change in y due to x is the strength or extent of correlation. That is the correlation coefficient r. And r lies between -1 and +1. So what you have is -1 is less than or equal to r is less than or equal to 1. But then it means modulus of r is less than or equal to 1.
magnitude of R is less than or equal to 1. They can ask you the examples. Speed and the distance traveled. More the speed of the vehicle, more distance will be traveled, so it's positive. More the speed of the vehicle, less is the time required, so it is negative. More is the expenditure on advertisement, more are the sales expected, so it's positive. Whenever you are searching for correlation between two variables, assumption is that other variables are kept constant. More is an expenditure on advertisement, less is the profit of the company. Spend more, profit less. More is the price, more is the demand. Positive correlation. Size of the shoes and the intelligence, zero correlation, uncorrelated. Speed of the car and the distance traveled before coming to rest when the brakes are applied. Now when the brakes are applied, more is the speed, more will be the distance traveled to come to rest. And similarly, more will be the time required to come to rest. So in that case, it's positive correlation. वैसे speed and time, more is the speed, less is the time required. तो ये negative correlation होता है. But when the brakes are applied, more is the speed, more time will be required to come to end. And therefore that will become now positive correlation. मॉड्यूल में गलत आंसर दिया है. Temperature and the sale of ice cream will be positive. Then we have a spurious correlation. I'm talking deliberately, taking pauses in between because I want you to get this concept penetrated in your mind. The variables are spuriously correlated if there is no causal relation between x and y, but the correlation does exist because of the presence of the third variable. Example of that could be price of tea and demand for coffee. Price of tea more, demand for tea less, and therefore demand for coffee more. Spurious means indirect. We always collect the bivariate data, means data collected on two variables at the same point of time. जिस ईयर का रेन हो उसी ईयर का क्रॉप होगा. The study of type or nature of correlation and strength or extent of correlation is correlation analysis. So correlation analysis aims at determination of type and strength of correlation between the variables. We collect the bivariate data, but these bivariate data may be bivariate raw data or maybe bivariate frequency distribution. It can be found for both. So bivariate raw data means x values and y values. Bivariate frequency distribution means x values, y values, and बीच में वो टेबल रहता है frequencies का. So frequency is generally number of people. So it is never negative. It can't be a fraction. It can be 0, 1, 2, 3, 4. If there are m rows, n columns, the number of cells or number of cell frequencies is m into n. Now x classes or x values with their row totals is the marginal distribution of x, and y columns and their totals will be the marginal distribution of y. So there are two marginal distributions, one for x and one for y. But all the rows of x and only one column of y. That's conditional distribution of x. So number of conditional distributions is m plus n. So number of cell frequencies is mn.
Number of marginal distributions is 2 and number of conditional distributions is m plus n. You then have the first method of doing the correlation analysis, that is scatter diagram. Now plot of points is the scatter diagram. Simple. If the points show inclining pattern from lower left southwest to upper right northeast, correlation is positive. I repeat, upper left to lower right, correlation is positive or direct. If the points decline from upper left to lower right, upper left, northwest to down here, lower right, that is southeast, correlation is negative. If the point shows uniform distribution, circular or symmetric curve, then the correlation is 0. If the points are on horizontal line, correlation is 0. If the points are on vertical line, correlation is 0. Now scatter diagram can determine the plot of points, that is the scatter of points. Scatter means spread of points. If the points are exactly on the line, correlation is perfect. Now if line inclines from lower left to upper right, positive 1, perfect positive. And if line declines, then it is perfect negative, R is minus 1. Perfect means what? Y depends only on X, there is no other factor. Now, if R is plus 1, line inclines and it makes acute angle with positive x-axis. And if R is minus 1, line makes obtuse angle with positive x-axis. This scatter diagram method can determine linear as well as curvilinear or non-linear correlation. Linear means only rise, only fall. Curvilinear means rise and fall both. Means curve. However, scatter diagram method can determine type positive negative, but it fails to determine strength. And therefore we come to the second method, that is Karl Pearson's correlation coefficient, that is also called product moment correlation coefficient. That is denoted by R. Now, in this what happens, X bar is arithmetic mean of X, that's average. Y bar is arithmetic mean of Y, say for rain and crop. Importantly, X minus X bar is the deviation from X of variation in X. Y minus Y bar is the variation in Y, that is deviation of Y. Then variance of X in measures of central tendency and dispersion chapter, we would use the formula 1 upon n summation x square minus x bar the square. But here we will say x minus x bar. दोनों formula same ही है, requirement अलग है. X minus x bar the square average. So it will be 1 upon n summation x minus x bar the square, which is the square variation. And standard deviation is root of variance, which is variation. Covariance is a joint variation. Joint variation may be positive, may be negative. Covariance may be positive, covariance may be negative, covariance may be 0. So as such, the first formula for the correlation coefficient is R is equal to covariance between X and Y over sigma X into sigma Y. The second formula that you can use is that R is equal to summation X minus X bar into Y minus Y bar over
first root. Now regression also has the same formula, okay? Summation x minus x bar the square into second root summation y minus y bar the square. This is sum of products of deviations. And these two are the sums of squares of deviations. When these are given, second formula is used. And when observations are given, this formula will become n summation xy minus summation x into summation y over first root n summation x square minus summation x the bracket square into second root n summation y square minus summation y the bracket square. This is when observations are given. So as far as the formulae are concerned, you can just keep in mind these three formulae for that matter. We then proceed on to the different theory points belonging to this. Number one, that R is always less than or equal to 1. Therefore, this covariance between x and y over sigma x sigma y is less than or equal to 1. That means covariance between x and y is less than or equal to sigma x into sigma y. Means maximum value of covariance is a product of standard deviations. The covariance between x and y is restricted to product of standard deviations, sigma x into sigma y. That's maximum. Mind wise, sigma x and sigma y standard deviations are never negative. They're always positive or 0, but not negative. But covariance may be positive, I repeat. Covariance may be positive, covariance may be negative, covariance may be 0. Now, we say ahead, and this is very important, and I promise that one question will be definitely based on this. What do? I do something with x. Multiply by a, say add h. I'll get it converted to u. Y multiply by b and add suppose k. It gets converted to v. This addition subtraction is the change of origin, and multiplication division is the change of scale. And then the result is r between u and v is same as r between x and y. So correlation coefficient is independent of change of origin and scale. Measure of central tendency is dependent on both change of origin and scale. Measure of dispersion is independent of change of origin but depends on change of scale. And regression coefficients are again independent of origin but depend on scale. However, if these A and B are both positive or both negative, then R between u and v is same as R between x and y. But if they are opposite in signs, one positive other negative, R between u and v is negative of R between x and y. So what happens is that if I say 2x plus 3u is equal to 7, 5y minus 3v is equal to 10, and suppose if I give you R between x and y is minus 0.4, then what is R between u and v? If that you require, एक बात समझने की कोशिश करो, you always have to put it in the form u equal to something. And therefore what happens is that 3u is equal to minus 2x plus 7. And by the way, minus 3v is equal to minus 5y plus 10. And therefore u is minus 2 by 3x plus 7 by 3. We are not interested in what values, but one thing sure, that this is one positive, one negative. ये 10 by minus 3 कुछ होगा. So this is negative and this is positive. So R between u and v is negative of R between x and y. So it is negative of negative 0.4, which is 0.4. वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आने वाला है हर अटेम्प्ट में.
Now, we said ahead that the correlation coefficient is a pure number, not having any unit of measurement simply because it is a ratio. So when R is 0.8, R is 0.8, it's never 0.8 kg. Correlation coefficient can be found only for the quantitative data, cannot be found for qualitative data. So scatter diagram method and Carl Pearson's correlation coefficient, they are used only for the quantitative data in terms of numbers, not for qualitative data in terms of say colors and nationality and all that. Carl Pearson's correlation coefficient can be found only for linear data because it is only either positive or only negative. It can't be both. But scatter diagram is for both. R is the correlation coefficient. R square is coefficient of determination. R is the correlation coefficient. R square is the coefficient of determination, and that means explained variation. You know the reason. Explained means reason you know. Out of total variation. Or for that matter, it is 1 minus unexplained out of total. It is 1 minus unexplained out of total. And 1 minus R square is coefficient of non-determination, and that means unexplained out of total. ये मैंने क्या लिखा है उसके तरफ मत देखो, because I am not aiming for you to copy it down, because we have done it several times. But it can also be written as 1 minus explained out of total. If we just see the class notes, you will get all this theory. लिखने की जरूरत नहीं है. For example, if R is 0.7, R square is 0.49. That is coefficient of determination is 0.49. So 49% is the explained accounted variation. And 1 minus R square is 0.51, which is coefficient of non-determination. So 51% is unexplained variation or unaccounted variation. Now this much is the correlation theory. Third type we proceed on to is Spearman's rank correlation coefficient. Now that is used when the judges judge the participants' performances in any competition. What is the procedure? X values are given, Y values are given. Largest is rank 1, second largest is rank 2, third largest is rank 3, etc. So we have Rx, ranks of X, Ry, ranks of Y. D is Rx minus Ry, that is pairwise difference in the rank. We compute D square and take total summation D square. And then that Rs is equal to 1 minus 6 summation D square over n into n square minus 1. It's a formula. So this is fourth formula that you have to prepare in correlation. Well, theory में if Rs is positive, the opinions of the judges match, they agree. Negative, disagree, mismatch. Positive one, perfect agreement. Negative one, perfect mismatch. So even Rs lies between -1 and +1. -1 is less than or equal to Rs, less than or equal to 1. Importantly, summation D, sum of differences in ranks, is always equal to 0. Now Rs importantly can be found for qualitative as well as quantitative data. Numbers के लिए भी निकाल सकते हो और color of dresses के लिए भी निकाल सकते हो. But Rs is also only for linear data correlation, not for curvilinear. Is that clear?
So that's the third type, rank correlations. कितना easy है देखो, आसान है देखो. And the fourth is coefficient of concurrent deviations. There what do? Leave the first pair, ignore. And if the observation is greater than previous, give positive sign. If observation is less than previous, give the negative sign. So Sx, signs of x. Sy, signs of y. N, by the way, S is equal to Sx into Sy. So there positive, 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 negative, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, negative. Simple rules of multiplication. Now n is number of observations. K is always n minus 1 because first pair is not given a sign. C is the number of concurrent deviations, which is number of positive signs in the S column. And then that R is equal to positive or negative root of modulus of 2c minus k over k. Now if that 2c minus k over k is positive, outside the root I take positive. And if that 2c minus k upon k is negative, outside the root I take minus. That's coefficient of concurrent deviations. Even that is ranging between minus 1 and plus 1. That is only for the quantitative data. It is only for the linear correlation, not for the curvilinear. Only scatter diagram is for linear as well as curvilinear out of the 4 methods. And even that is a pure number, not having any unit of measurement. This is all about correlation analysis. आधा घंटा भी नहीं लगा अपने को. Correlation analysis aims at determination of type and strength, where regression analysis aims at determining equation, mathematical relation between the variables, and thereby estimation of one variable for the known value of other variable. So regression means prediction. Now, regression analysis aims at finding mathematical equation and thereby making a prediction. But what you predict and what actually happens, there is a difference. So actual minus prediction is called the error or residue. And that error may be positive, error may be negative, error may be 0. There are two types of regression. Y on X means find Y. X on Y means find X. Y on X means find Y. X on Y means find X. Now this regression may be linear, may be curvilinear. May be linear, may be curvilinear. But we consider linear. So there what happens is that there are two lines of regression, Y on X, X on Y. Now when you are finding Y, you set up a line and Y means height. So you have to minimize the vertical distance in Y on X. And in X on Y, you like to minimize the horizontal distance. So Y on X, minimize vertical distance, X on Y, minimize horizontal distance. The regression line is passing through the center of points. Like scatter diagram, we get the points and the line passes through them. So number of points above the line is same as number of points below the line. And as such, the sum of deviations above from the regression line is always 0. Because जितने positive है उतने ही negative है, तो total 0 बनता है. Ideally. Then we said this regression method is also called the method of least squares. Is also called the method of least squares. Then we said that the form of line of regression Y on X is Y is equal to A plus BX.
and x on y, a plus by. Now this b is b y on x. Y on x, yx, y on x, yx, y on x, yx, y on x, yx. No confusion. X on y, xy. So this is bxy. So byx is the regression coefficient y on x, and bxy is regression coefficient x on y. So if I tell you that 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 7 is the equation y on x, then you have to put it in the form y equal to something. So it will be 3y is equal to minus 2x plus 7. Y is equal to minus 2 by 3x plus 7 by 3. Because this is y on x, this is byx. And bxy cannot be found. Y on x can give you byx but cannot give you bxy. And if I say that this 5x minus 3y is equal to 10, this is x on y, then you have to put it in the form 5x is equal to 3y, then my plus 10. तो x is 3 by 5y, तो ये 3 by 5 हो गया bxy. तो y on x को रिप्रेजेंट करो y इक्वल टू समथिंग, फिर कोएफिशिएंट जो है वो मिलेगा byx. x on y पुट इट इन द फॉर्म x इक्वल टू समथिंग, जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो होगा bxy. बट byx कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम by on x, and x on y can give only bxy. Opposite reverse intersecting नहीं हो सकता. Then we said bxy and byx are either both positive or both negative. They cannot be opposite in signs. Either both positive or both negative, but they cannot be opposite in signs. Then we had r is equal to positive or negative root of bxy into byx. And if both are positive, outside r is positive. If both are negative, outside r is negative. So r is geometric mean of regression coefficients. R is the geometric mean of regression coefficients. So how can the question be asked? They will give you bxy, they will give you byx, they will ask you r. और they will give you r, they will give you bxy, they will ask you byx. तीन में से दो वैल्यूज देंगे, तीसरी वैल्यू पूछेंगे. So r is the geometric mean of regression coefficients. Then we said that this r is less than or equal to 1, already said. So what it means is that bxy into byx, this product is less than or equal to 1. Product cannot be greater than 1. तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ग्रेटर देन 1 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये 2 है, ये 3 है, पॉसिबल ही नहीं है. Product should be less than or equal to 1. We then said that equation of regression y on x is of the form y is equal to a plus b y on x into x. X on y is x is equal to a plus b x on y into y. यहाँ ये by x स्लोप होता है और ये जो a है वो y इंटरसेप्ट होता है. y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो लाइन है वो अगर ऐसी है तो ये होता है a, y इंटरसेप्ट. और x on y के लिए जो स्लोप होता है वो 1/bxy होता है, bxy नहीं होता है. एंड ये जो यहाँ कांस्टेंट होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, कट ऑन x एक्सिस. समझा? नाउ you know r is the geometric mean of regression coefficients. तो bxy plus byx divided by 2, this is arithmetic mean.
And arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean, but geometric mean is R. Therefore, bxy plus byx, this sum should be greater than or equal to twice R. Another note. Sum of regression coefficients is greater than or equal to twice correlation coefficient. There are two lines of regression. There are two lines of regression and their point of intersection is x bar comma y bar. There are points of intersection is x bar comma y bar. Theory. But in simultaneous equations, what x you get is x bar and what y you get is y bar. So after solving the two equations as simultaneous equations, x bar and y bar can be obtained. And second point is x bar comma y bar satisfies regression equation. Means what? If I tell you 3x plus 5y is equal to 7, that if this is the regression line y on x, and if I tell you that x bar is equal to 10, and if I ask you y bar is what, then it will mean 3x bar plus 5y bar should be equal to 7. So 3 into 10 plus 5 into y bar is equal to 7. So 5y bar is equal to minus 23. Calculation you do it. Y bar will be minus 23 divided by 5. Importantly, x bar comma y bar satisfies the regression equation. And if you solve the two equations as simultaneous equations, what x you get is x bar, what y you get is y bar. Then we said that if R is 0, the two regression lines are perpendicular to each other. So angle between them is 90 degrees. If R is plus 1, perfect positive, then angle between regression lines is 0 degrees. जिस डायरेक्शन में x जाता है उसी डायरेक्शन में y जाता है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 degrees. And if r is minus 1, angle between them is 180 degrees because एक डायरेक्शन में x जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में y जाता है. The angle is 180 degrees. But anyway, if r is plus 1 or minus 1 means perfect correlation, then there is a unique line, single line, whose equation is y is equal to a plus bx. And if r is plus 1, b is positive, r is minus 1, b is negative. So if r is plus 1 or minus 1 means perfect correlation. What do you mean by perfect correlation? Y depends only on x. Then there is a single line of regression. Same line is y on x, same line is x on y. And its form is y is equal to a plus bx. If r is plus 1, b is positive. If r is minus 1, b is negative. Now, regression analysis will give you bxy, byx. You can find r as well. So how does that happen? Equation of regression y on x is of the form y is equal to a plus byx into x, and x on y is x is equal to a plus bxy into y. But ये a b यहाँ के और वहाँ के अलग अलग है. But the form, ये form हो गया. Equation is y minus y bar on the left, x minus x bar on the right. जो पता है वो right को होता है और जो निकालना है वो लेफ्ट को होता है. एंड ये y on x है, तो दिस इज byx. एंड हियर x minus x bar on the left, y minus y bar on the right, connected by b, x on y, where byx is equal to r sigma y over sigma x, and bxy
is R sigma x over sigma y. जो सेकंड आता है वो नीचे जाता है. Similarly, byx is equal to covariance between x and y over x यहां आएगा, लेकिन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों नहीं आते हैं. जो सेकंड वेरिएबल है उसका स्क्वायर बन के आता है, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया. एंड बी एक्स वाई is equal to covariance between x and y over arrow, it will be sigma square y variance of y. Formula means what? This is formula. So if you know the correlation ke teen formula, you can write this very easily. And when observations are given, then byx is equal to same n summation xy minus summation x into summation y over arrow n summation x square minus summation x the bracket square. अभी y की टर्म नहीं आती है, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला में दो रूट्स थे, अब यहाँ रूट नहीं आता, एक ही टर्म आती है. सिमिलरली बी एक्स वाई. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड देन वी सेड regression coefficients are independent of change of origin, but they do depend on change of scale. Now what does that mean? What it means is that if I say u is equal to ax plus h, v is equal to by plus k, then bvu will come from byx because y gives v and x gives u. But then what happens? Again, u का कोएफिशिएंट नीचे आएगा तो a नीचे आएगा तो b ऊपर आएगा. And buv will come from bxy. But then again, v का कोएफिशिएंट नीचे आएगा तो b नीचे आएगा, a ऊपर जाएगा. Regression coefficients are independent of change of origin, but they do depend on change of scale. That's what we had. Now the one variety of question here in is, sometimes they give you two equations, but they don't tell you which is y on x and which is x on y. In fact, that is to be determined. So what will you do? At the choice one, consider first line say of y on x, you will get byx. So second line obviously is x on y, you will get bxy. Now if bxy into byx is less than or equal to 1, our choice is correct. But otherwise, then line 1 will become x on y and line 2 will become y on x. तो वहां थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ेगा. लाइन 1 को y on x कहो, y इक्वल टू समथिंग करो, फिर byx मिलेगा. सेकंड लाइन इज x on y, x इक्वल टू समथिंग कहो, फिर यू विल गेट bxy. प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 1 है तो चॉइस करेक्ट है, अदरवाइज अपोजिट चॉइस इज करेक्ट. You understand? And once you know byx, you know byx is equal to r sigma y upon sigma x. So if you know byx, if you know r, if you know sigma y, you can find sigma x. byx is equal to r into sigma y over sigma x. तो ये चार टर्म्स है, उसमें कौन से भी तीन टर्म्स पता है तो चौथी निकाल सकते हैं. समझा ना? Is that clear? So that's the end of correlation regression revision. कितना टाइम लगा? 1 घंटा भी नहीं लगा, 40 मिनट्स में. हमारा चैलेंज है, इसके अलावा दूसरा कुछ आया तो आई एम रेडी टू लूज अ बेट टू यू. एक भी पॉज मैंने लिया, मतलब एक भी जगह कोई ऐसा नहीं हुआ कि कुछ रह गया है या कुछ भूल गया है. एंड द सीक्रेट इज ओनली वन. सीक्रेट इज ओनली वन, दैट माय टीचिंग एक्सपीरियंस is double of your age.
All right. Now, एक बार ये समझता है तो प्रॉब्लम्स कितने आसान होते हैं, एमसीक्यू कितने आसान होते हैं देखो। और वो समझने के लिए अभी आप जवाब देंगे, चिल्लाएंगे और हम मार्क करेंगे। हाँ, चिल्लाओ मतलब डिसिप्लिन से चिल्लाओ। बायवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, फटाफट बोलो। टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। चॉइस की तरफ देखो भी मत। विदाउट लुकिंग एट द चॉइस यू टू गिव मी द आंसर। चॉइस होगा वहां बीच में कहीं तो भी। देन for the bivariate frequency table with P plus Q classification, total number of cells is, very good, some cell frequencies may be 0 but they cannot be negative, so they may be 0. In that table the number of marginal distributions is always 2. The number of conditional distributions P plus Q. Correlation analysis aims at determination of extent of correlation and of course type also, but prediction and relation ये regression में जाता है। prediction and regression, वो relation निकालना ये regression में जाता है। हाँ, यहाँ type and strength determine, तो यहाँ C choice। हाँ, regression analysis फटाफट बोलने का। regression analysis aims at finding equation with relation and prediction, A and C। हाँ, लेकिन एक्सटेंट मतलब कोरिलेशन, वो कोरिलेशन में जाता है। फटाफट, स्प्यूरियस कोरिलेशन, डोंट लुक एट द चॉइसेस, क्या कहेंगे? नो कॉजल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फटाफट करना है तो चॉइसेस मत पढ़ो, आंसर दो। हाँ, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर कर्वीलीनियर। Then plotted points upper left to lower right, upper left to lower right, but negative का मतलब ही होता है inverse, but that's okay. Now 11, plotted points are evenly distributed. If all plotted points lie on the single line. हाँ, तो अभी क्या होता है, सिंगल लाइन मतलब एक तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा और परफेक्ट निगेटिव होगा। लाइन इंक्लाइन है तो परफेक्ट पॉजिटिव, लाइन डिक्लाइन है तो परफेक्ट निगेटिव। तो यहां कौन सा चॉइस मार्क करेंगे? सी और डी। सी में एंड लिखा है, एंड मीन्स बोथ। यू कैनॉट बी बॉय एज वेल एज गर्ल, यू कैन बी बॉय और गर्ल, इट कैन बी पॉजिटिव or negative. Then 13, shoe size and intelligence 0. Speed of automobile and distance traveled by it after applying the brakes, पॉजिटिव। वो नेगेटिव दिया है मॉड्यूल में, पर वो पॉजिटिव है। जितना ज्यादा तेजी से जाएंगे उतना ज्यादा समय जाने के बाद फिर रुकेंगे, समझा ना? स्कैटर डायग्राम हैज फॉर, scatter diagram can give you only the type, it cannot give you the string. So nature. हाँ, Pearson's correlation coefficient is used for finding only linear, scatter diagram for both, regression for both, but other three methods only for linear. हाँ, product moment correlation coefficient means Carl Pearson's, बोलो। Finding the nature and extent, so it is C choice। अभी यहाँ दोनों निकाल सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव भी समझता है, स्ट्रेंथ भी समझता है। ओके, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, देन द पॉइंट्स गो फ्रॉम लोअर लेफ्ट, R is +1, 1 है तो लाइन है, प्लस है तो राइज है, 1 है तो प्लस लाइन है और प्लस है तो राइज है। तो क्या कहेंगे? लाइन गोज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। 20, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो बिटवीन कोवेरियंस एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस।
काय बघू सी म्हणते ती व्हॉट शुड आय सी एनिवे ना अरे काय कभी कभी I cannot be serious for a long time, it is my problem. 21st, covariance between the two variables is either positive or negative or zero. तो क्या choice mark करेंगे? हाँ, correlation coefficient between the two variables is doesn't have a unit of measurement. Index number also does not have a unit of measurement. And regression coefficients also do not have the unit of measure. They are the pure numbers. Anyway, what are the limits of correlation coefficient? -1 and +1 including. But what is the other way of writing it? Modulus of R is less than or equal to 1. 24. In case of correlation coefficient is 1. 1 means +1. 1 means +1. Relation is. Relation is y is equal to a plus. 1 means that is a unique line. Single line. So y equal to a plus bx. But r +1 दिया है ना, तो b should be positive. -1 होता तो b should be negative. But यहाँ +1 दिया है, तो कौन सा चॉइस मार्क करेंगे? b चॉइस. हाँ, अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता, बरका ये नहीं कहा होता कि वो +1 है, उन्होंने कहा होता ±1 है, तो फिर हमने कहा होता कि बी में भी पॉजिटिव, बी में भी, बट यहां क्लियरली पॉजिटिव बोला है ना. फिर 25th, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज. तो पहले क्या करना है आपको? 2x + 3y + 4 इज 0. ये सिंगल लाइन दिया है ना, तो वो एक तो 1 होगा, नहीं तो -1 होगा. बट दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ इज bx by by. तो ये y on x अगर है, तो you have to put it in the form y equal to something. So 3y is -2x -4. y is -2/3x -4/3. तो ये हो गया byx. And because it is negative, r should be -1. So r should be -1. Anyway, for finding correlation coefficient between attribute means qualitative, we should use rank correlation. Because बाकी जो 3 मेथड्स है, स्कैटर डायग्राम हो, कार्ल पियर्सन हो या कॉन्करेंट डेविएशन, they are only for quantitative data. Then 27, degree of agreement between the judges, rank correlation coefficient. Perfect disagreement, -1. समझा ना? husband and wife after 5 years of marriage, -1. Perfect disagreement. इसको फैन चाहिए, उसको ब्लैंकेट चाहिए, तो काय जमता ही नहीं, समझा? वो क्या करने का? एसी लगाने का और दोनों ने एक ही ब्लैंकेट में घुस जाने का. अभी का ब्लैंकेट में घुसने का, ब्लैंकेट के अंदर नहीं घुसने का. अभी लो, हाँ, come on. When we are not concerned with magnitude, we use rank correlation. Magnitude में इंटरेस्ट नहीं है हमें इंटरेस्ट किस में है? एक्चुअली ना, well, it can be concurrent deviations as well, because वहां भी हमें पॉजिटिव निगेटिव में ही इंटरेस्ट है. तो it could be which choice? It could be, well, it should be only concurrent then among the given. क्योंकि A और C नहीं दिया है ना, तो C मार्क करो. क्योंकि concurrent is more appropriate, क्योंकि वहां सिर्फ प्लस माइनस को देखते हैं, राइज और फॉल को देखते हैं, मैग्नीट्यूड को नहीं देखते. ऐसा थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आ सकता ऐसा. एक ही कुछ चॉइस होगा दोनों में से. Which is the quickest method? Leave it. Absolutely leave it. 31st. What are the limits of concurrent deviations? बोलो फटाफट.
-1 and +1 including both the limits. There are two variables x and y. Number of regression equations is 2. What is that? Y on x and blood pressure depends on age. We consider blood pressure depends on age, na? So blood pressure on age. On means it depends on. ऐसा है वो. On का मतलब depends on. So blood pressure on age. Method applied for deriving regression equation is least squares. Difference between observed value and estimated value is error or residue. Error म्हणायचं नाही. Error or residue. Error. Now this error can be positive, it can be negative, it can be 0. Regression line of y on x is derived by y on x means y निकलना है, तो वर्टिकल एरर को मिनिमाइज करना है, एंड x on y में हॉरिजॉन्टल. थ्योरी में सब कुछ है अभी. 38. Two lines become identical if r is +1 or -1. समझा ना तुमको? And if r is 0, they are perpendicular. Means angle is 90 degrees. Anyway, what are the limits of regression coefficients? Product of regression coefficients is less than, it can be less than or equal to unity. Unity means 1. समझा क्या? हाँ. Regression coefficients remain unchanged due to origin से वो unchanged रहते हैं. Scale से change होता है. They depend on scale. Then 41st, if it is -0.9, then the determination is r square, means 0.81. है कि नहीं भारी? And 42nd, correlation coefficient is 0.7, percentage of variation unaccounted, r square is 0.49, and 1 minus r square is 0.51. So accounted is this and unaccounted is this, so 51%. Set B. Look, set B. बिल्कुल रुकने का नहीं है. अभी क्या है? अभी जंगे मैदान, मैदाने जंग, जंगे मैदान नहीं, मैदाने जंग नजदीक आ गया है. हाँ. Look. ओके. कोवेरियंस. तुम बोलेंगे तो मैं लेक्चर बंद करूंगा. हाँ बिल्कुल नहीं बोलने का. अगर तुम बड़बड़ करेंगे तो मैं समझूंगा कि तुमको जरूरत नहीं है. आता है तुमको. लुक, if for the two variables x and y covariance is 40, variance of a, एक बात समझने की कोशिश करो. variance is square and standard deviation is sigma. तो क्या क्या दिया है? covariance दिया है 40, variance of x दिया है 16, तो standard deviation होगा 4, और variance of y 256 दिया है तो ये होगा 16. and that's the answer you want. calculation बाद में करो. समझा? Is it impossible? Not. Second, covariance is 15. Then what is the restriction? Now you know we have seen the result that covariance between x and y is less than or equal to product of standard deviations. है कि नहीं? तो इसका मतलब product of standard deviations should be greater than or equal to 15. उल्टा हो गया ना sign? It should be greater. Of course, it should be greater than or equal to, but more than 15 we accept. Okay. Third, covariance is 20. Variance of one variable is 16. So 20 divided by 4 into sigma y. You know that should be less than or equal to 1. R is less than or equal to 1. What it means is that phi is less than or equal to sigma y, means sigma y is greater than or equal to phi u, but they are talking about variance, so sigma square y is greater than or equal to 25. ये आंसर है. अभी चॉइस के तरफ देखो.
मोर देन 100, तो मोर देन 100 एक्सेप्टेड है क्या, एक्सेप्टेबल है क्या, है। वैसे 25 to 100 भी है, पर मोर देन 100 इज एक्सेप्टेबल, समझा ना, मोर देन 100 इज एक्सेप्टेबल। लेकिन बी चॉइस के तरफ देखेंगे तो मोर देन 10 है, तो मोर देन 10 में क्या होता है, 10 to 25 में रिजेक्टेड है, 25 के ऊपर एक्सेप्टेड, सो पार्शियली रिजेक्टेड हो गया, तो पूरे में भी रिजेक्ट ही होगा ना यार, हो कि नहीं। अगर तुमको ऐसा लगा कि उस लड़की का नाक अच्छा नहीं है, तो तुम पूरा लड़की रिजेक्ट करेगा ना। समझा क्या, बाकी कहीं नहीं। अभी अभी देखो मेरे तरफ, हाँ, लुक एट मी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तुम थक गए क्या, बड़बड़ क्यों करते हैं, लुक एट मी, ए पिल्लू, इकडे बघ की, लुक, तिकडे एक पिल्लू है। अभी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अभी ये एक ही इक्वेशन दिया है कि नहीं, तो इसका मतलब है r इज आइदर +1 और -1, दैट डिपेंड्स ऑन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बी पॉजिटिव है तो r +1 है, बी नेगेटिव है तो r -1। तो अभी ढूंढो कौन सा चॉइस है वो, हाँ। इफ r इज 0.6 कोएफिशिएंट ऑफ नॉन, तो r स्क्वायर इज 0.36 एंड 1 माइनस आर स्क्वायर इज 0.64, तो ये अकाउंटेड है, ये अनअकाउंटेड, ये डिटर्मिनेशन है, ये नॉन डिटर्मिनेशन। सो कौन सा चॉइस होगा, असो त्यात काही कौतुक नाही, इकडे बघा, u प्लस 5x, स्टॉप टॉकिंग, लास्ट वॉर्निंग, I will have no pains at all in closing the lecture and going back to home. Because this I am doing to give you an additional rescue, additional support in your emergency condition. This is ICU, समझा क्या, intensive care unit. You are all on ventilator. अरे नहीं तो नहीं करेंगे तो नापास होंगे ना तुम, तो दिस इज वेंटिलेटर, यू आर ऑन वेंटिलेटर, तरी पण बडबड बडबड करतात, काय तो काय, बस u is equal to, देखो मेरे तरफ, अभी these are good questions, one page full of questions are just going to be based on one single result, तो इतना उस result का importance है। देखो मेरे तरफ, u plus 5x given etc, r is 0.58, तो what is between u and v, एक बात समझने की कोशिश करो कि always you have to put it in the form u equal to something, v equal to something, तो u is minus 5x plus 6 minus 7v is minus 3y plus 20, तो u is minus 5x plus 6v is 3 by 7y plus 20 by minus, तो ये एक निगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है, तो ये अगर 0.58 है तो नया होगा -0.58, दोनों सेम है तो सेम रहता है, अपोजिट इन साइंस है तो साइन बदलता है, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, समझा क्या तुमको। 7th, x and u is given, stop talking, so again I put it in what form, that's what I'm telling you, that this type of questions, change of origin scale is very important। तो कैसे लिखूं मैं इसको, for u is equal to -3x plus -7, वो 7 का कोई वैल्यू नहीं है, फिर -3/4x -7/4, और y में कोई चेंज किया ही नहीं है, तो v इज y,
समझा ना, y में कोई चेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो r बिटवीन x एंड y एंड r बिटवीन u एंड v, बट v मीन्स y ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हो गए। तो ये ओरिजिनली कितना दिया है -0.6, तो वो बदल के क्या होगा 0.6। v मतलब y में कोई चेंज किया नहीं है। दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, क्या है, दोनों चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक में भी चेंज हो सकता है। समझा क्या? मी काय म्हटलं तुम्हाला कळलं का? क्या बोला मैंने? ठीक है, लुक, लुक, x इज टू बी कन्वर्टेड टू u। ये जो जीरो होता है ना, वो इंडिकेटर होता है। व्हेन विल 5 बिकम 0? काय म्हणत आहे, रब करा आणि तिथे लिहा 0। तो u में बी इक्वल टू x माइनस 5। अभी यहां क्या होता है, ये 0 है, 8 का 0 कब होता है? हाँ, तो v इज इक्वल टू y माइनस 8। ये कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, ये कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो r विल रिमेन सेम, 0.93 का 0.93 ही रहेगा। समझा क्या तुमको? 0.93 का 0.93 ही रहेगा। लेकिन यहां देखो 9 सम के, यहां स्टॉप टॉकिंग प्लीज एंड सीरियसली मीन इट। इन द सेम क्वेश्चन अभी क्या दिया है देखो, इन द सेम क्वेश्चन अभी दिया है, तो क्या दिया है देखो, ये का ये 2 का बन गया 10, 3 का बन गया 15। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज दैट मीन? मतलब u इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। फिर 4 का बन गया -24, 6 का बन गया -36, तो v इज -6y। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो साइन चेंज होगा। तो जो ओरिजिनली 0.93 है वो अभी -0.9 है कि नहीं? सोपा, इजी है ना? हाँ, तो फिर अभी 10वें की तरफ देखो। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स, व्हाट इज द मीनिंग? जैसे वर्ड्स है वैसे सिंबल्स में लिखो। सम ऑफ squares of differences in ranks is 21 and n is 8. RS is what? What is the formula? 1 minus 6 summation d square over n into n square minus 1. 1 minus 6 into 21 over 8 into 64 minus 1। कैलकुलेशन तुम नंतर करो। समझा? सिर्फ डाला है मैंने, कहीं नहीं किया है। हो गया? अभी 11th, rank correlation coefficient is what? 0.6. What is 0.6? RS. So RS is 0.6. Sum of squares of differences in ranks is 66. So 6 into 66 over n into n square minus 1. Go from answer to question. n की वैल्यू जब निकालना है तो ऑलवेज गो फ्रॉम वेयर टू वेयर, आंसर टू क्वेश्चन। तो जिसके लिए LHS RHS सेम होता है, दैट इज द राइट चॉइस। समझा? गुड। 12th, while computing the rank correlation coefficient between profit and investment and etc, देखो मेरी तरफ, for 6 pairs of observations क्या दिया है कि n is 6, one difference in rank is taken as 3, correct being 4। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। हाँ, अभी इट्स अ गुड क्वेश्चन।
तो आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर -1। आर एस दिया है 0.4। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर नहीं है पता। अभी एन कितना दिया है? तुम्हारा डोका है का? एन कितना दिया है? 6। तो फिर 6 इंटू 36 - 1। तो इसका मतलब हो गया कि 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर 6 इंटू 35 कितना होता है? तो काय ये वैल्यू निकालो ना। वो ऐसे भी 6 कैंसिल होगा काय। तो समेशन डी स्क्वायर ओवर 35 इज 1 - 0.4 0.6। तो समेशन डी स्क्वायर कितना आया? 0.6 इंटू 35 कितना था? 21। But then summation d square correct is summation d square wrong. Subtract the square of wrong, add the square of correct. तो 21 - 3 square plus 4 square कितना होता है देखो? 28। तो नया आर एस कितना होगा? 1 - 6 इंटू 28 ओवर 6 इंटू 36 - 1। सब्ट्रैक्ट व्हाट इज रॉन्ग, एड व्हाट इज करेक्ट। समझा? तो जो आएगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? आंसर होगा। लुक एट मी, 10 pairs of observations, what is 10? 10 pairs of observations, what is 10? So n is 10। number of concurrent deviations is 4, what is 4? यार बोला रे पटपट। c is 4। हाँ, अभी r का फॉर्मूला क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव? स्क्वायर रूट ऑफ modulus of 2c minus k over k। Therefore, tell me what does that mean? कुछ तो कहो। अरे बोलो ना पटापटा। तो r is equal to what? पॉजिटिव और नेगेटिव रूट ऑफ, बोलो, 2 इंटू 4। k क्या होगा? 9। सो 8 माइनस 9 ओवर 9। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ -1/9। तो ये नेगेटिव आया है कि नहीं? तो आउटसाइड नेगेटिव होगा, रूट ऑफ 1/9। तो इट विल बी -1/3। चेक। नोट्स तैयार करो अच्छी तरीके से, जो क्लास में लिया है वो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। समझा क्या? इज दैट क्लियर? तो फिर 14, look at me, 14, the coefficient of concurrent deviations for p pairs of observations. What is p? What is p? n. So n is p, so k is p minus 1। समझा ना? no आणि that r is given to be 1/√3। so 1/√3 is equal to पॉजिटिव और नेगेटिव, पर वो पॉजिटिव है। मॉड्यूलस ऑफ c कितना दिया है? 6। सो 12 माइनस k ओवर k। स्क्वायर करो, 1/3 is 12 minus k over k। so k is equal to 36 minus 3k। तो फिर 4k is 36, k is 9। बट k 9 है तो n 10 होगा ना, एक ज्यादा होता है। तो दैट इज हाउ एंड दैट इज वाई n विल बी व्हाट? 10। समझा क्या? इज दैट क्लियर? हाँ, अभी 15th इज अ गुड क्वेश्चन। लुक एट मी, बिल्कुल नहीं बोले प्लीज। You can very easily see x values are given, y values are given. X values are given, y values are given. You can make the columns of x square, y square, xy और फिर टोटल, ऐसा कर सकते हैं। बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट 2k इधर और 2k इधर की वैल्यू सेम है, और देयरफॉर ये ऐसा सिमेट्रिक बन गया।
और अगर सिमेट्रिक है तो R 0 होता है. इट्स गुड क्वेश्चन. समझा क्या? इधर का और इधर का पार्ट सेम है तो वो सिमेट्रिक बन गया. तो R इज व्हाट? 0. हो गया क्या? देन लुक एट द क्वेश्चन नंबर 16. अभी ये A और B कैसे निकालेंगे? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें A और B मिलेगा. तो फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके A एंड B निकालना है मेरे को. एंड देन द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. A और B निकालो, करो और कैलकुलेशन करो. सॉल्व द साइमल्टेनियस. पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10a प्लस 20b इज इक्वल टू 80. 10a प्लस 25b इज इक्वल टू 95. फिर सब्ट्रैक्ट 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 माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 15. b इज 3. समझा क्या? अभी ये b डालो किसी एक इक्वेशन में, a निकालो. 30 10 2 आता है क्या? So y is equal to 2 plus 3x. That is the equation you want. A और B का वैल्यू मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकाला और फिर डाला. क्या डाला? वैल्यूज को डाला. पोपट दिसते ना ती हिरो हिरो. ग्रीन ग्रीन पोपट दिखती है ना तू. हो गया क्या? ठीक है. तो फिर अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स है ना, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ट्रस्ट. Sixth of January result, I mean the exam will be over. By end of February result will be declared, and from 1st of March revision batch will start. तो दूसरा कुछ पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए, इतने बड़बड़ करते हैं तो. झालं का मम्मा? किती दिवसांनी आली तू मम्मा? डॅडी कुठे? आता बाळ मोठं झालं असेल, आता थोडा अभ्यास कर. काय हो गया क्या? अभी 17th क्वेश्चन के लिए तुम मेरे तरफ देखो. लुक. स्टॉप टॉकिंग. Countdown starts. 3, 2, 1. Go. Look at me. Regression equation y on x and x on y, these are given. Find the means of x and y. They can be found by solving the equations. So 2x plus 3y is equal to minus 1. 5x plus 6y is equal to minus 1. When you solve these equations as simultaneous equations, what you get is x bar and y bar. इसमें और भी एक तरीका है, you can go from answer to question. वो भी कर सकते हैं. जो चॉइस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, that's a right choice, but otherwise also it's not very difficult. तो 4x plus 6y is equal to minus 2. 5x plus 6y is equal to minus 1. माइनस माइनस प्लस. तो फिर माइनस एक्स इज माइनस 1. एक्स इज 1. फिर यहाँ डालेंगे
तो 2 + 3y is -1, 3y is -3, y is -1 -1 is the right choice. समझा? मैंने जस्ट सॉल्व किया, मैंने कुछ नहीं किया. अभी 18 sum. हाँ, now this is good variety of question, 18 and 19. 3x plus y is equal to 13. नका ना बोलूं प्लीज. 3x plus y is 13 and two equations have been given. Which one is y on x? ये ऐसा हमको पता नहीं होता है, तो we have a random choice. तो मैंने choice 1 लिया कि line 1 is y on x आणि line 2 is x on y. ये मैंने assume किया. तो here it will be y is equal to -3x plus 13 and here 2x is -5y plus 20. तो x is -5/2y plus 20/2. तो byx is -3 और bxy is -5/2. But byx into bxy is -3 into -5/2, which is 15/2, but that is greater than 1. So the choice 1 is wrong. अभी तुमको करेक्ट चॉइस सिर्फ निकालना है ना, तो वो करने की जरूरत नहीं. अभी तुमको ये पता हो गया कि लाइन 1 शुड बी x ऑन y एंड लाइन 2 शुड बी y ऑन x. तो विच लाइन इज y ऑन x? सेकंड लाइन. ये डायरेक्ट आंसर मिलता है. हाँ, अगर byx bxy निकालना है तो फिर वो करना पड़ेगा. ऐसा है. समझा? क्लियर? Very, very important question, this 17 onwards. Now look at me for the 19th. Again, two equations have been given. अभी इसमें एक करेक्शन होना जरूरी है, और वो इसलिए होना जरूरी है कि bxy and byx are either both पॉजिटिव और बोथ निगेटिव. ये ऐसा एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो ही नहीं सकता इक्वेशन में. समझा क्या? तो यहाँ करेक्शन करो. ये जो प्लस दिया है उसको माइनस करो, और फिर लाइन 1 लाइन 2 चॉइस से करो. आई एम वेटिंग. लाइन 1 लाइन 2 करो चॉइस. जो रिवीजन अभी लेते हैं ना, वो तुम्हें डायरेक्टली एग्जाम में वो यूजफुल होगी. अरे करो ना. करो बाळांनो पटापटा. हाँ, तो टेल मी which line is x on y, which line is y on x? First equation is x on y and second equation is y on x. मिला है क्या? मिला क्या नहीं मिला? सेकंड इक्वेशन क्या? फर्स्ट इक्वेशन x on y. x on y is second and y on x is first, right? Very nice. 20. यारे थोड़ा इंतजार करो ना. बी साइलेंट, स्टे फोकस्ड, बी सीरियस. आज तारीख कितनी है? 5. एग्जैक्टली 1 month and 1 day, 6th of Jan को तुम फ्री होने वाले. तो तुमको कितनी बड़बड़ करना है उतना करो. एक ही महीना ना, आज 5th है, एक दिन ज्यादा से. एग्जैक्टली 1 month के बाद तुम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन और बीसीके की प्रिपरेशन करोगे. मैथ्स का पेपर हो गया होगा इसके पहले दिन. फिर कौन बोलेगा तुमको रिग्रेशन इक्वेशन करो? अभी करना है ना. हाँ, लुक एट मी. 4 जनवरी को तुमको अगर
हंसना है तो अभी सीरियस रहो. U and V these are given. आता रिग्रेशन कोइफिशिएंट देखो मेरे तरफ. U is equal to 2x plus 5. V is minus 3y minus 6 आणि BYX is 2.4. अभी दे वांट BVU. हमने क्या कहा है आपको कि BVU comes from BYX. इसमें U वाला कोइफिशिएंट A नीचे जाता है, B वाला ऊपर आता है. तो अभी यहाँ ये A है और ये है B आणि therefore BVU is equal to minus 3/2 into 2.4 जो आएगा वो आंसर होगा. समझा? Is that clear? 21st. For y minus 5x is 15 is y on x. Fortunately they have given you that this is y on x. You don't have to decide. तो अभी मेरे को बोलो कि ये y on x है पहला इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे? 4y is equal to 5x plus 15. So y is 5 by 4x plus 15 by 4. And therefore coefficient of correlation R is 0.75. तो ये जो मिल गया वो मेरे को BYX मिल गया which is 5 by 4. बरका अभी they want you to find a regression coefficient x on y. So which result should I use? R is equal to positive or negative root of BXY into BYX. तो R तुमको पता है 0.75. ये पॉजिटिव निगेटिव का वो तो पॉजिटिव ही होगा. 5/4 इंटू BXY. तो फिर समझा ना तुमको? 0.75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 इंटू BXY. तो 0.75 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इज BXY. आया? आएला है. हो गया बाळांनो. फिर 22nd. Again y on x is given, x on y is given. यार ये नका ना बोलूं. y on x is given, x on y is given. तो फिर y is minus 2x plus 3. x is minus 1/8 y plus 3/8. समझा ना? तो ये BYX हो गया -2 और BXY हो गया -1/8. तो R is पॉजिटिव और नेगेटिव रूट ऑफ -2 इंटू -1/8. पर यह निगेटिव है तो बाहर निगेटिव होगा. रूट ऑफ 1/4. विल इट बी -1/2? चेक. आया? वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस. समझाएगा तुमको? गुड. 23rd. देखो मेरे तरफ 23rd में क्या दिया है? रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब क्या? BYX is -3/4. समझा ना बाळांनो? कोरिलेशन कोइफिशिएंट is R is √3/2 and variance of y is 4 means sigma square y is 4, so sigma y is 2. तो अभी which formula should I use? Tell me. BYX is equal to R sigma y over sigma x. तो इसमें वो डालो. तो फिर BYX is given to be -3/4 is equal to √3/2 into 2 over sigma x.
तो सिग्मा एक्स को इधर खींचा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो √3 इंटू 4 वो बड़ा रे, यहां भी करेक्शन चाहिए। ये आर है ना, इसको निगेटिव कहो, क्योंकि बी एक्स वाई वो बी वाई एक्स निगेटिव है और आर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं हो सकता, करेक्शन चाहिए। तो ये भी निगेटिव है, तो इट विल बिकम 4/3 √3 इंटू 4/3। तो स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर एक्स वेरियंस 3 इंटू 16/9, ये 16/3 आया क्या देखो प्लीज, करेक्शन चाहिए। आर मेक इट निगेटिव, क्योंकि बी वाई एक्स निगेटिव दिया है तो आर शुड बी निगेटिव ओनली, नहीं तो वो इनवैलिड होता है। थके क्या तुम? स्टेमिना खत्म? मेरा स्टेमिना है, मैं 12 घंटे भी कर सकता हूँ। क्योंकि जो आता है वो अंदर से आता है। तुम्हारा क्या है, सब ऊपर ऊपर से। 24th क्वेश्चन के लिए देखो, 24th के लिए मेरे तरफ देखो, इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्या दिया है, y is equal to 3x plus 4। तो if that is true, you know x bar y bar satisfy the equation ना, तो y bar is equal to 3x bar plus 4। अभी x bar की वैल्यू -1 दी है, सो 3 इंटू -1 प्लस 4 विच इज 1। लो, समझा? सेट सी के तरफ नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, because they themselves have said that this is 5 marks question, so you can leave it, okay? अभी ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक तुम ट्राई करेंगे क्या? मेरा आपसे एक वादा है कि इसमें भी एक भी क्वेश्चन तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, समझा क्या? बिल्कुल। थोड़ा करना है क्या कुछ क्वेश्चंस? नको? नको? किती गुणी वाढे आज, डिफिकल्ट नाहीच आहे त्याच्यात काही, सिर्फ एक बार करो बस, ठीक है? तो 10 मिनट्स ब्रेक एंड प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, गुड, 10 मिनट्स ब्रेक।
Once the mic is on, mouth should be shut. Probability is going to be started. You have to ensure that you understand everything of it. Pin of silence. I'll not give an instruction again. If I find you are disturbing, you are not interested, I'll stop the discussion. I don't have any problem whatsoever. Time starts now, countdown starts now. 3, 2, 1, go. Being the chapter in statistics theory is very important. Mind well. At the first point, if probability of A is 0, A is an impossible event. And if probability of A is 1, then A is a sure event. A is sure event. And as such, 0 is less than or equal to probability is less than or equal to 1. So probability cannot be negative. The probability cannot be negative or greater than 1. Probability cannot be negative. Probability cannot be greater than 1. At the third point, what is proportion? What is percentage? Is the probability. It means likely, and it also means confidence. When I say proportion, it means out of. When I say percentage, it means out of 100. पाच जणांबरोबर ती एकटी कुठे गेली होती का? Abhi, if that is true, stop talking now. If that is true, the one important thing you require is the notation. Whenever you want A or B, it refers to or means at least one. And then it means A union B, which is also written as A plus B. And what it means is collection. Collect all together. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6,
A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6. When I say A and B, it means both. It means if there are three, we'll say all. It means A intersection B means it is just sometimes written as AB, A into B. Whenever I want to say not A, it means A dash, A bar, A C. Similarly, when I want to say not B, it means B dash, B bar, BC. मैराथन है, हंसने का नहीं. एक ही जोक में कितने बार हंसेंगे तुम? अभी whenever I want to say only A, it means A होता है and B नहीं होता है. ये notation very very important. What it means is that A में से B का पार्ट कट करो. A में जो B का पार्ट आता है वो कट करो तो only A मिलता है. Similarly only B मतलब A नहीं होता है and B होता है. लिखने के लिए ये आसान है, लेकिन समझने के लिए ये B में से A निकाल देंगे तो only B मिलेगा. It's easier. Neither nor. Now neither nor. A नहीं होता है and B नहीं होता है. But remember, it means by De Morgan's law, A union B the bracket dash. मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब opposite of at least one. At least one means A union B. And when I say only one, it means A होता है and B नहीं होता है, plus A नहीं होता है and B होता है. ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं. Is that clear? Now, remember, हो गया? Are you writing? तो फिर मेरे तरफ देखो. Remember, A and B are called mutually exclusive. Are called mutually exclusive. That means disjoint events. Disjoint events, if they can not happen together. If they cannot happen together, both cannot happen. You can pass, you can fail, you can't be both. But what it means is that therefore probability of A intersection B will be 0. साथ में नहीं हो सकते हैं, तो कॉमन पार्टी नहीं है, तो ये 0 होता है. मतलब ये A and B totally separate events है. So probability of A intersection B will be 0. And then what happens is that probability of A union B is probability of A plus probability of B. So if they are disjoint, union becomes plus. Second one is A and B are mutually independent or just independent, कुछ भी कहो. They are mutually independent
if together can happen, if together they can happen. Matlab, if A can solve the problem, B also can solve the problem. So the people solving the problem, they are independent. People surviving, they are independent. एक सर्वाइव होता तो दूसरा भी हो सकता है. And then if they are independent, ये सब MCQ का collection है. If they are independent, then intersection becomes a product. Means P of A intersection B is P of A into P of B. They are independent. Importantly, couple of results. Importantly, the couple of results is that if A and B are independent, if A and B are independent, A and B dash, A dash and B, A dash and B dash, they are also independent. एक पेयर इंडिपेंडेंट है तो बाकी भी सब इंडिपेंडेंट होते हैं. जितना एग्जाम में लगेगा उतना ही हम लेने वाले हैं, ज्यादा बड़बड़ करने वाले नहीं है. Similarly, if A, B, C are independent, then all possibilities are independent. Which all possibilities? A, B, C dash. A, B dash C. ये सब जितने भी possibilities होंगे सब independent है. Over. सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के एंगल से अभी इसके तरफ देखो. थर्ड, if A and B are disjoint, they can never, they should not be independent. And if A and B are independent, they are never disjoint. They are never disjoint. ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं. डिसजॉइंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है तो डिसजॉइंट नहीं. My next point over here is, and that's the definition of exhaustive events. Exhaustive events means A union B is equal to S, means probability of A union B is 1. That means other than A and B, nothing else is possible. मतलब A और B को छोड़ के बाकी कुछ भी पॉसिबल रहता ही नहीं है. What does it mean? Head and tail एक coin toss करते हैं तो H and T के सिवा और कोई नहीं है पॉसिबल, so exhaustive है. But then what happens is probability of A union B is 1. That is the MCQ. Now, if they are disjoint as well as exhaustive, दोनों है, तो फिर क्या होता है कि P of A plus P of B, C है तो plus P of C, ये sum of probabilities is 1. Sum of probabilities is 1. अगर वो डिसजॉइंट भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है,
तो sum is 1. Then the sum is 1. And then finally, equally likely. Likely का मतलब probability. तो equally likely means probability of A is equal to probability of B. Probabilities are equal. अभी probabilities are equal, but A may be equal to B or A may not be same as B. देखो probability of boy is half, probability of girl is half. So being boy, being girl, they are equally likely. But they are not same. Being girl and being boy, they are not same. हो गया, लिखा, ठीक है. अभी just look at me. So equally likely means probabilities are equal, but they may or may not be equal. Now look at me. Over ना? अभी लिखेंगे कब, पढ़ाई कब करेंगे? ज्यादा समझने की कोशिश करो लिखने के बजाय. Take it not to the book, take it to the mind. Take it to the not to the book, but मेरे पास नहीं है. तुम्हारे पास दिमाग नहीं, मेरे पास वो नहीं. हो गया क्या? अभी look at me. Please stop talking. Now, for example, if die is thrown, and if I say 1, 2, 3, 4, they are disjoint because together they cannot happen. They are not exhaustive. Why? Because 5 and 6 are also remaining. And their probabilities, each of them is 1 by 6. Therefore, they are equally likely. Therefore, they are equally likely. समझा? ये मीनिंग समझो. Equally likely means probability is the same. Disjoint means together cannot happen. Exhaustive means उसको छोड़ के कुछ अगर है तो exhaustive नहीं होता है. समझा? Is that clear? Okay. Now, stay focused. The very first type of this is, type 1 of this is going to be 1, 2, 3, 4 coins tossed. 1 or 2 dice thrown. A number is drawn. A number is drawn from set and normal year or the leap year has 53 Sundays, suppose it could be Monday. ये है टाइप 1 की सिचुएशंस.
दिस इज टाइप 1। उसमें भी क्या है कि अगर पता है तो टाइम सेव होगा, तो नॉर्मल ईयर के लिए 1/7 होता है, लीप ईयर के लिए 2/7। इट्स वेरी स्टैंडर्ड। ये टाइप 1 होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलने का। और इन दिस केस व्हाट डू वी डू? वी say that probability of A is n of A over n of S. So one coin toss H and T, two coins toss H and H, H and T, T and H and T and T. Three coins toss H and H and H, H and H and T, H and T, T and H and H, T and T and H, T and H and T, H and T and T, T and T and T. One die thrown, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 dice thrown, 1 and 1, 1 and 2, dot, 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 1 and 6, 2 and 1, 2 and 2, dot, 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 2 and 6, dot, 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 6 and 1, 6 and 2, dot, 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 6 and 6. One coin toss, n of s is 2, two coins toss, n of s is 4, three coins toss, n of s is 8, four coins toss, n of s is 16, n coins tossed, n of s is 2 raised to n. One die thrown, 6 raised to 1, two dice thrown, 6 raised to 2, three dice thrown, 6 raised to 3, n dice thrown, 6 raised to n. N children born, 2 raised to n. Coin is same as child. क्योंकि दो दो आउटकम्स होते हैं. Only thing is that you toss a coin, but you don't toss a child. Now, that is how. अभी एक ही पॉइंट ध्यान में रखो कि if 2 dice are thrown, then what can be the sum? जो बार बार लगता है. 2 dice thrown, what can be the total? What can be the total? अरे तसं नाही. Total of the points, sum of the points. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 के लिए टोटल 2 होता है, 6 के लिए टोटल 36 होता है. उसमें डबलेट का मीनिंग होता है 1 1 2 2 3 3 4 4. समझा? अभी टाइप 2 इज वेरी सिंपल. ट्रस्ट मी दिस चैप्टर एज वेल. कोई ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. टाइप 2 is use of permutations and combinations. अगर सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट है तो परम्यूटेशन. नाउ देयर व्हाट हैपेंस. नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज. इसमें क्या होता है कि विदाउट एनी कंडीशन, without condition, what you get is the total number, and under the condition, what you get is the favorable number, and favorable upon total is the probability that you want. Favorable upon total is the probability that you want. Is that clear? Without condition, total number, अंडर कंडीशन फेवरेबल नंबर. तो जब कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है तो क्लासेस बनाना पड़ेगा हमेशा, और परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है तो डायग्राम निकालना पड़ेगा हमेशा. हमेशा म्हणजे हम शाह नहीं है, हमेशा. Is that over? पॅन्ट कुठे गेली रे? पॅन्ट कुठे गेली? विसरून आला तो पॅन्ट घाल. अभी देखो मेरे तरफ. यहां एक सिचुएशन है.
that the 4 children had the different birthdays. Yeah, this is a very specific situation. Different birthdays. Then it will be 365, 364, 363, 362. जो specific situations है उसको हम listing उसका कर रहे हैं. And 365, 365, 365 and 365. Favorable upon total. अभी यही situation होती है letters in the boxes. You put say 4 letters in the 5 boxes. Same situation. टोटल में क्या होगा, हर लेटर के लिए 5 बॉक्सेस है. और फेवरेबल में क्या होगा कि पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3. समझा? इज दैट क्लियर? टाइप 2 में क्या करना है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये ऐसा है. नका बोलो रे प्लीज. That point is the concept of odds. If I say odds in favor are m is to n, and if I say odds against are m is to n, अब इसका मीनिंग समझो. If this is given, if this is given to be favor, first is favor, second is against. And if it is given to be against, first is against, second is favor. But in both the cases, the formula remains same. It is favorable upon total. And therefore, in the first case, that probability will be m upon m plus n. And the second case, it is n upon m plus n. फेवर बोला तो पहले फेवर, और अगेंस्ट बोला तो पहला अगेंस्ट, दूसरा फेवर. ओवर. तो as a counterpart of this, if I say probability of A is 3 by 7, then what it means is that 3 are favor and remaining 4 are against. 3 plus 4 is 7. So odds in favor will be 3 versus 4, and odds against पहले लिखो 4 against 3, 4 versus 3. odds की concept वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवे, प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में ऊपर फेवरेबल ही आता है, लेकिन वर्ड्स में पहले फेवर दिया है तो पहला फेवर होगा, मतलब फेवर बोला है तो, और अगेंस्ट बोला है तो पहला अगेंस्ट है, दूसरा फेवर है. इतना ही सिद्धांत में रखो. इट्स वेरी सिंपल. ट्रस्ट. समझा? क्लियर? टाइप 3 सी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. व्हाई डू यू डिस्ट्रैक्ट योर कॉन्सेंट्रेशन प्लीज? कहीं तो भी बड़ा करियर करना है तो एफर्ट्स भी तो बड़े लेने ही पड़ेंगे. लुक, type number 3 is some probabilities given and some probabilities required. Some probabilities are given and some probabilities are required. Now remember, I want an involvement, please. Fun case of a fun. Mind well, there are 3 types of events. एक बार ये समझ गया तो ये टाइप 3 बहुत आसान होता है.
First is general, second is disjoint, third is independent. यार हे बघा मी काय म्हणतो माहिती का, एग्जाम अगर 1 महीने के बाद है, less than 1 month, तो लेक्चर अटेंड करना है तो कंसंट्रेशन करो, और कंसंट्रेशन नहीं करना है तो लेक्चर अटेंड मत करो ना. मैंने भी ऐसा किया होता तो आप यही बोलते ना, तो लेना है तो नीट लो ना, ऐसा काय. Suppose if I come and start talking about myself, I did so many things and all that and all. You will say we are not interested. Study के लिए आए तो study करेंगे. तो ऐसा ही है ना, reciprocate होता है ना वो. So remember, in case if probability of A intersection B or probability of A union B is not given, then they are either disjoint or independent. Then they are either disjoint or independent. But if either probability of A intersection B or probability of A union B is given, they will be treated to be general. हो गया. अभी if they are general, the first thing that you require is an addition theorem. Actually ना ये चैप्टर्स में आसान मार्क्स है, श्योर मार्क्स है. रिलेशन फंक्शन है, इट्स मोर देन इनफ. समझा. नाउ इफ आई वांट नाइदर, अभी यहां एक बात ध्यान में रखो कि इफ दे आर डिसजॉइंट, then neither nor means 1 minus at least 1. Nobody means 1 minus somebody. कोई नहीं है मतलब 1 minus कोई तो है. कोई तो कहाँ होती है, कोई अंबे में होती है. कोई कहाँ होती है, अंबे. का तुझ्याकडे नाही का कोय. अभी if they are disjoint, A can happen, B can happen, together they cannot happen. And an immediate consequence of that, probability of A intersection B is 0. Very, very important and vital questions. Then union becomes plus. Yes, spontaneity develop honi chahiye. Is P of A plus P of B. I mean, when I say probability of only A minus B, it means probability of A. क्योंकि A के साथ B हो ही नहीं सकता है ना, तो ओनली और A सेम ही हो गया. MCQ means what? This is MCQ. And similarly, if I say only B minus A, it means P of B. And nobody is then again 1 minus somebody. तो पहले दो केसेस में nobody means 1 minus somebody. हो गया. Now the third.
independent means intersection becomes a product. So what it means is probability of A intersection B is P of A into P of B. Only A intersection B dash means P of A into P of B dash. एक बार इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट होता है तो ये बाकी लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, इज बट नेचुरल. Then probability of A dash intersection B is probability of A dash into probability of B. Neither nor A dash intersection B dash is probability of A dash into probability of B. रहा सवाल एटलीस्ट वन का. ये तीसरे में क्या करेंगे? somebody means 1 minus nobody. उल्टा. So it is 1 minus P of A dash into P of B dash. हो गया. Very nice. And we have an addition theorem for 3 events. ये भी MCQ के लिए आ सकता है, इसलिए लिखते हैं. And that is addition theorem for 3 events is A union B union C is P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. शायद MCQ के लिए आ सकता है, इसलिए हमने लिखा है. लेकिन क्या इम्बाइब होना चाहिए अपने दिलों पे और दिमाग पे? Disjoint means union becomes plus, independent means intersection becomes a product, and general means addition theorem. Only A means A minus both. Only B, B minus both. समझा? That's type number 3. और क्या प्रॉब्लम्स तो बहुत आसान होते हैं. ए डिफाइन करो, प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो, टाइप आइडेंटिफाई करो, ये फॉर्मूला यूज करो कि हो गया. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है. टाइप 4. टाइप नंबर 4. And that is all about conditional probability. Conditional probability. Again, why are you talking? Conditional probability. Remember, probability of A given B. लेकिन कभी कभी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी ऐसा भी लिखा गया है, प्रिंट किया गया है, और एक बार तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऐसा भी लिखा गया. अभी वो प्रिंटिंग का स्टाइल है, समझा क्या? बेसिकली इट इज ए स्लैश ए दैट वर्टिकल लाइन बी, ए गिवन बी, बट द मीनिंग इज consider the probability of both means A intersection B, and then remove B, you get A.
रिमूव बी तो क्या होगा? इफ यू रिमूव बी, if you remove b, what will happen? A will remain simple. Polluted mind, dirty mind. And tell me what is probability of B given A. Then consider the probability of both. Remove A, you will get B. Then what is the second point out here? हे बघा, अभी जो रहा है ना वो थोड़ा सा ही रहा, फिर वी कैन स्टार्ट हिटिंग ऑन द एक्सरसाइजेस, लेकिन तब तक थोड़ा सा पेशेंटली देखो इधर क्या है वो. The next one is the compound probability theorem. And the compound probability theorem is, आपको दोनों होना चाहिए. A should happen and B should happen, but they happen in sequence. तो पहले क्या होता है? A. Then what happens? B. But when B happens, you know A has already happened. So this is used when A and B are dependent. मतलब B, A का B पे impact है. A affects B. क्योंकि A होने के वजह से B की probability बदलती है. If you know you are in the month of December, probability of rain will be reduced. That's the conditional probability. And this is just equal to probability of A into probability of B if these A and B are independent events. समझा ना? प्लीज 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 स्टे फोकस, स्टे फोकस. आज हंसेंगे तो एग्जाम के बाद रोएंगे. प्लीज. Over. Now look at me. Stop talking. अभी होता क्या है मेरे तरफ देखो. Nobody will talk a single word, please. ये जो टाइप नंबर 4 है इसमें variety of similar looking situations we will write. Okay, look at me. एक बॉक्स है. There is one box. There is one box. अभी जो 5-10 मिनट्स का डिस्कशन है इट इज वेरी क्रूशियल. प्लीज. एक बॉक्स है. एक ही बॉक्स है. 5 are red, 3 are white. In all there are 8 balls. बर का पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखो इधर.
नहीं तो मैं रुकता हूं 2 मिनट, जिनको बाहर जाना है वो जाओ। हम सिचुएशंस को कंपैरेटिवली देखेंगे अभी। हर सिचुएशन में एज्यूम करो मेरे को 2 रेड बॉल चाहिए। एज्यूम करो मेरे को 2 रेड बॉल चाहिए। अभी सिचुएशन नंबर 1 इज साइमल्टेनियस सिलेक्शन। मतलब एक साथ दोनों को निकालो। देन द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 5 रेड है तो 5 में से 2 5C2 एंड 3 में से 2 3 में से 0 3C0 और टोटल 8 में से 2 8C2। ये साइमल्टेनियसली दोनों निकाला तो हाँ यही एक रेड एक व्हाइट चाहिए तो 5C1 3C1 अपॉन 8C2 होगा। बट ये क्या है? साइमल्टेनियस। Second situation is that this is 1 by 1. This is 1 by 1 without replacement. तो फिर कैसे करेंगे कि probability that the first is red and second is as well red. समझा ना? तो पहले रेड के लिए there are 5 red, so 5C1 over 8C1. अभी विदाउट में एक रेड कम होता है तो 4C1 over 7C1. तो विदाउट में द नंबर विल गो डाउन ऑब्वियसली बिकॉज दैट वन यू आर थ्रोइंग इट आउट। समझा ना तुमको? दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे कैन गिव एनीथिंग, दे कैन गिव चेंज द बॉल्स, दे कैन मेक इट कॉइज, दे कैन मेक इट व्हाटएवर, बट विदाउट में क्या होता है? नंबर कम होता है। थर्ड सिचुएशन इज 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। अभी वहां भी मेरे को क्या चाहिए? पहला इज रेड, दूसरा इज रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी है 5C1 over 8C1, दूसरे रेड के लिए भी होगा 5C1 over 8C1। विदाउट में नंबर कम होता है, विथ में नंबर सेम रहता है। हियर द नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमने बताया है उसके अलावा कुछ आया तो आई एम रेडी टू लूज एनी बेट ऑन दैट, प्लीज। हाँ ठीक है, कलर्स बदल सकते हैं। तो तुम बोलेंगे तुमने रेड लिया, उन्होंने ब्लू पूछा। हाँ अभी सिचुएशन नंबर 4 इज यहां अभी 2 बॉक्सेस होंगे, 2 या 3, पण फुल स्टॉप, 2 या 3 फुल स्टॉप। और इमेजिन फर्स्ट बॉक्स first box 5 red 3 white, second 2 red 9 white, total 11. And then what happens? I take a box and then take a ball. एक बॉक्स डिसाइड करो, फिर एक बॉल उसमें से निकालो, बॉक्स एंड बॉल। और वो बॉल मेरे को चाहिए रेड बॉल, तो इवेंचुअली सिचुएशन इज वो मेरे को रेड चाहिए। तो क्या होता है कि वो एक तो इसमें से आएगा, नहीं तो इसमें से आएगा। अभी 2 बॉक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ देम इज हाफ एंड हाफ। एंड यहां के रेड की प्रोबेबिलिटी है 5C1 over 8C1,
यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी है 2C1/11C1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऑन दिस ब्रांच इट इज हाफ इंटू 5/8 प्लस अनदर हाफ इंटू 2/11. 3 है तो 1/3 होगा. यह क्या है? बॉक्स एंड बॉल. यह है बॉक्स एंड बॉल. वो बना रे. यह है बॉक्स एंड बॉल. मतलब पहले बॉक्स निकालो फिर बॉल, उसमें से बॉल निकालो. बट बॉल इधर से आ सकता है नहीं तो उधर से आ सकता है, पर बॉल रेड चाहिए. अभी फिफ्थ सिचुएशन is the fifth situation is again you had two boxes. Again you had two boxes and the situation is transfer a ball. Transfer a ball and then draw a ball. Transfer and draw. Okay? एक बॉल ए में से बी में ट्रांसफर करो और फिर बी में से एक निकालो एंड दैट यू वांट रेड. ऐसा है. तो अभी होता क्या है देखो यहां कि situations possibilities are two here. What are the two possibilities? जो पहले आया है, पहले से दूसरे में आया है वो रेड है, और जो पहले से दूसरे में आया है वो व्हाइट है. ऐसी दो पॉसिबिलिटीज है. फिर अगर ये रेड आता है तो इस केस में देयर विल बी 3 रेड 9 व्हाइट 11 टोटल. और ये पहला व्हाइट आता है 2 रेड 10 व्हाइट टोटल इज 12. समझा? फिर ये समझा ना तुमको? बॉल को ट्रांसफर किया. अभी ये सेकंड जो बॉल हम निकालते हैं वो मेरे को रेड चाहिए यहां से. सो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी पहला रेड. पहला रेड मतलब 5/8. पहले का रेड ये 5 में से 8 में से 5 ना. पहला रेड. फिर पहला रेड ट्रांसफर करने के बाद वहां 3 रेड होते हैं 12 में से. यार ये समझा क्या? पहला रेड उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8. वो रेड ट्रांसफर करने के बाद वहां होते हैं 3 रेड आउट ऑफ 12 और मींस प्लस पहला व्हाइट है तो 3/8 और व्हाइट ट्रांसफर किया तो रेड 2 ही रहते हैं तो 2/12. नो ये नंबर्स बदल सकते हैं. बॉक्सेस 2 की जगह 3 हो सकते हैं. बॉल की जगह कॉइन हो सकता है. वो बॉयज एंड गर्ल्स हो सकता है कि स्टूडेंट यू सिलेक्ट शुड बी इंटेलिजेंट. तो फिर बॉय में से इंटेलिजेंट, गर्ल में से इंटेलिजेंट. बॉय की प्रोबेबिलिटी हाफ, गर्ल की प्रोबेबिलिटी हाफ. 99% बॉयज इंटेलिजेंट, 0.1% गर्ल्स इंटेलिजेंट. काय काय वैसे वर्षा लई बोलून राहिली. लई बोलून राहिली म्हणलं. श्रावणी लई बोलून राहिली. समझा क्या बाळांनो ये टेक्निक? अभी और एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें वंस अगेन you had 2 boxes. Again you had 2 boxes. नका बोलू रे please. Again you had 2 boxes. 5 are red, 3 are white, total is 8. 2 are red, 9 are white, total is 11. अभी इसमें से one from this, one from A and one from B. In that case they become independent. यहां से एक निकाला और यहां से एक,
तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. एंड देन यू वांट बोथ शुड बी रेड. तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट बनता है. तो इट विल जस्ट बी द फर्स्ट रेड मीन्स 5/8, सेकंड रेड मीन्स 2/11. दैट्स इट. अभी वो इंडिपेंडेंट हो गया, कोई ट्रांसफर विस्फर नहीं किया है. इसमें से एक निकालो, उसमें से एक निकालो, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट बन जाता है. समझा क्या तुमको? यार हो कि नहीं? ये प्रोबेबिलिटी की सिचुएशंस दिखती सिमिलर है, लेकिन बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है. उसको समझेंगे तो प्रॉब्लम्स आसान होंगे. इज दैट क्लियर? से यस. यस. ओवर. गुड. अभी मेरे तरफ देखो, इतना ही प्रिपेयर करना है टाइप 4 में, बाकी का ही नहीं करना है. अभी लास्ट टाइप होता है टाइप नंबर 5, और जिस टाइप में you have got a probability distribution or probability mass function. Possible values of x are x1, x2 up till xn, with the probabilities being p1, p2 up till pn. So this is a PMF if number 1 px is greater than or equal to 0. Can probability be negative? Forget. You can write like this: if 0 is less than or equal to probability less than or equal to 1. Obvious. And the second is that sum of probabilities must be equal to 1. Sum of probability should be equal to 1. Probabilities must add up to 1. Then how do we find expectation of x? x1 into p1, x2 into p2 up till xn into pn. How do I find expectation of x square? बोलो ना. x1 square into p1, x2 square into p2 प्लस अप टिल xn स्क्वायर इंटू पी एन. माइंड वेल, सिर्फ x का स्क्वायर किया है, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं किया है. एंड देन वेरियंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x द ब्रैकेट स्क्वायर. And then standard deviation is root of variance. समझा? So what can this x be? X can be number of heads. X can be number of tails. X, if die is thrown, it can be outcome. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6. बराबर ना? 1, 2, 3, 4, 5. It can be the profit. Profit means what? Gain. It can be the gain. समझा? Is that clear? Trust me, अलावा इसके कुछ नहीं आने वाला. और देन लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस. वो एमसीटी एमडी में भी सेम ही लगता है. सो लुक एट मी. लिखेंगे, इसको रब करो सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ एमसीक्यूज. Look, and the first one is expectation of k is k. Why? हाँ, तो एक बात समझो, एक्सपेक्टेशन मीन्स अरिथमेटिक मीन. ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ के इज के. वाई? बिकॉज के कितने भी रखा तो भी अरिथमेटिक मीन के ही होता है.
Second point is that the standard deviation of k, bolo, 0. Why? Because there is no variation. Because there is no variation. Expectation of ax plus b, ये change of origin and scale का हो गया देखो, है कि नहीं? सेम है change of origin and scale. तो just bracket को open करो, a into expectation of x plus b. If you have expectation of ax plus by plus c, आपको कुछ नहीं करना है, just open करो. A expectation of x, b expectation of y, c. Expectation of xy is expectation of x into expectation of y if x and y are independent. However, variance of ax plus b is a square into variance of a. Mind well, variance is with the square effect. तो वो क्या होता है? A square into variance of x. But if I ask you standard deviation of ax plus b, then it will be modulus of a into standard deviation of x. Why modulus? Because sigma can not be negative. ऐसा है. जो प्रोबेबिलिटी 10 दिन तक चली थी वो ये 1 घंटे के डिस्कशन में पूरी होती है कि नहीं? अभी रहा सवाल प्रॉब्लम्स का. हो गया? ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि कंसेप्चुअली करना और एग्जाम के लिए करना, ये दोनों में का डिफरेंस है. Unless you are conceptually strong, examination will not be easy. And unless you are exam oriented, concept is of no use. खोलेंगे? खोलेंगे क्या? खोलेंगे क्या नहीं खोलेंगे? तुम्हारे लिए मैं थोड़ी रुकने वाला, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है. लुक एट मी. 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करो. खोलो पटकन. क्या? मॉड्यूल. नाही तिकडे जा. Go there. हो गया क्या? खोला क्या? अभी 1 मिनट, पिन ऑफ साइलेंस, टेक अ पॉज. क्योंकि डिस्टर्बेंसेस के अंदर डिस्कशन किया तो इस फ्यूटाइल, इट्स ऑफ नो यूज. Are you set? Count down. 3, 2, 1, start. सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Which are mutually exclusive? What do you mean by mutually exclusive? Together they cannot happen. अभी मेरे को बोलो student is studying in the school and he studies philosophy. Can they happen together? Yes. So they are not disjoint.
Raju born in India is a fine engineer. Together they can happen. They are not disjoint. Ruma is 16 years old. She is a good singer. Together possible. They are not disjoint. But you are 15 years of age and you are a voter. That's impossible together. So they are disjoint. समझा ना? थोड़ा फटाफट फटाफट करने का. Look, if P of A is equal to P of B, then they are equally likely. Listen, they are equally likely. But that does not mean A and B are same. Maybe same, maybe different. तो क्या कहेंगे? A and B are same, not necessary. A and B must be same, not necessary. A and B may be different, yes. May be different, may be same. May और must में का फर्क समझो. समझा? 8. If probability of A intersection B is 0, means together they cannot happen. Common part नहीं है ना? So they are disjoint, means mutually exclusive. समझा? हाँ. If P of A union B is 1, then exhaustive. समझा क्या? कितना आसान है देखो. फिर unbiased coin is tossed. हेड एंड टेल आर. हाँ अभी जरा मेरे तरफ देखो. एक मिनट. हेड इज पॉसिबल, टेल इज पॉसिबल, टुगेदर नॉट पॉसिबल. सो दे आर डिसजॉइंट. हेड एंड टेल के अलावा कुछ नहीं है तो एग्जॉस्टिव. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल इज हाफ एंड हाफ. सो दे आर इक्वली लाइकली. कैसा है मीनिंग समझो. अभी वो एबीसीडी के में इंटरेस्ट नहीं है हमको, कंसेप्ट समझो. P of A is equal to P of B. A and B are equally likely. समझा ना? Very simple if you understand. Now P of A intersection B is equal to P of A into P of B. If intersection is product, they are independent. But यहाँ they are saying not equal to. That means they are not independent. So not independent means what? Dependent. समझा? हाँ. If P of A given B is P of A, इसका मतलब ऐसा है कि ये B का A पर कोई इफेक्ट नहीं है. मतलब they are independent. Now if that means A is independent of B and B is independent, दोनों होता है ना. ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं. समझा क्या? हाँ. So which choice will you mark? Both. D choice. If A and B are independent, then बोलो फटाफट बोलो. If A and B are independent, A and B dash are independent, A dash and B are independent, A dash and B dash are independent. Very good. If A and B are independent, they cannot be, should not be disjoint. If they are mutually exclusive, है कि नहीं? सब कुछ डिस्कशन, 1 घंटे के डिस्कशन में सब कुछ आ गया है. क्लियर? वेरी नाइस. कॉइन इज टॉस ट्वाइस. वन हेड, एक तो 1 हेड मिलेगा, नहीं तो 2 हेड्स मिलेगा, नहीं तो 0 हेड मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा. तो दे आर डिसजॉइंट. 0 1 2 के अलावा कुछ नहीं है तो दे आर एग्जॉस्टिव. बट रिमेंबर ये 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि 0 हेड मतलब टीटी. 1 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4 बिकॉज इट इज HTTH. तो ये इक्वल नहीं है. सो दे आर नॉट इक्वली. बाळांनो समझा क्या तुमको? मग प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1. Actually better choice should have been 0 and 1 both inclusive. पर अभी वो नहीं है तो ठीक है. समझा? If P of A is 0, बोलो पटकन. A will never happen. If P is to Q, हाँ. If P of A is 1, then it is a sure कशाला म्हणायचं, sure event. ये कॉन्वेंट मतलब मुझे शॉर. बट ठीक है चला. अभी एक फेवर है कि नहीं?
तो पहला फेवर होगा, तो द प्रोबेबिलिटी विल बी P अपॉन P प्लस Q. श्योर? नाउ P of A is 5/9. अभी हमेशा ये फेवरेबल होता है. तो 5 आर फेवरेबल, 4 आर अगेंस्ट, बट दे आर आस्किंग यू व्हाट अगेंस्ट. सो अगेंस्ट वाला पहला आएगा 4:5. है क्या नहीं? हाँ. Now A, B, C are disjoint and exhaustive. If they are disjoint as well as exhaustive, sum is 1. तो P of A plus P of B plus P of C is 1. समझा? हाँ. A, student reads in the school. B, plays cricket. अब ये दोनों हो सकता है क्या कि तुम क्लास में भी हो और ग्राउंड पे भी हो? ऐसा नहीं हो सकता. तो दे आर डिसजॉइंट. अभी डिसजॉइंट का मतलब क्या? हाँ, टुगेदर दे कैनॉट हैपन. समझा ना? टुगेदर दे कैनॉट हैपन. हाँ, व्हेन वुड यू हैव सेड बी चॉइस? थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूं मैं तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट. बी चॉइस करेक्ट कब होगा? रीड्स इन द स्कूल, प्लेज ऑन द ग्राउंड, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो वो एग्जॉस्टिव होगा और फिर वो 1 होगा. पर यहाँ तीसरी पॉसिबिलिटी है ना, यू आर नॉट रीडिंग इन द क्लास, यू आर नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बट यू आर डूइंग समथिंग इन द. अरे क्या है बर का. तो दूसरा पॉसिबल है ना, तो दे आर नॉट एग्जॉस्टिव. समझा क्या तुमको? ठीक है. अभी ये 25th क्वेश्चन is a good question. 25th, 26. Look, what is given? Probability of B given A. Tell me, formula is what? Probability of A intersection B over probability of A. Ratio जब होता है, that ratio is defined if denominator is not 0. Means probability of A is not 0. Means A is not impossible. ये हमने क्लास में लिया है, सब कुछ लिया है, मतलब ये भी लिया है. तो A is not impossible मतलब A is possible. समझा ना? अरे 26 में क्या होता है फिर देखो. The probability of A given B dash is equal to probability of A intersection B dash over probability of B dash. But this is defined if probability of B dash is not 0. What it means is 1 minus probability of B is not 0. Means 1 is not probability of B. That means B is not काय? Sure. हो गया क्या? ठीक है. तो फिर 27 if P of A is equal to P of A plus P of B, then tell me what are you going to say? Union becomes plus. When does union become plus? When they are दू का एक पटका. When does union become plus? When they are disjoint. Union becomes plus means disjoint. Intersection becomes product means independent. And probability of A union B is 1 means exhaustive. काय सिमरन? हाँ. Addition theorem is, बोलो फटाफट अभी without looking at the choice.
P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. आता एकमेकांचं पहा अभी नाही म्हणजे आन्सर अभी this 29 question is a good question. मतलब all are good but this is also good. अभी तुम जरा मेरे को बोलो मेरे का ये मेरे का ये P of A, P of B, P of A intersection B, they are connected by what? ये तुम्हें अभ्यास करता ना? P of A, P of B, P of A intersection B, they are connected by what result? They are connected by what? अरे बावरेट एडिशन थ्योरम है ना? So remember they are connected to what? A union B. Now you know P of A union B is always greater than or equal to 1 and less than or equal to 0. बरोबर ना? बरोबर ना? Any probability is either greater than 1 or less than 0 ना? Correct na? No. Then what is correct? Then what is correct? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता. तो this should be greater than or equal to 0. And therefore P of A plus P of B minus P of A intersection B, this should be greater than or equal to 0. तो इसको मैंने इधर खींचा तो P of A plus P of B is greater than or equal to P of A intersection B. तो चॉइस देखो कौन सा है काय बघू सी म्हणते शो सी म्हणते म्हटलं शो आपलं काय हो गया क्या 30th question बस stop talking 30th question हाँ now this is also a good question P of A minus B what do you mean by A minus B बोलो ना A minus B मतलब ओनली ए मतलब क्या ए में से कॉमन पार्ट निकाल दो सो विच चॉइस इज करेक्ट विच चॉइस इज करेक्ट बी ए में से कॉमन पार्ट निकाल दो हो बना अभी ये जो 31st क्वेश्चन है वो जरा उसके लिए मेरे तरफ देखो द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ये क्या होता है जरा एक मिनट मेरे तरफ देखो जरा थोड़ा सा मेरे तरफ थोड़ा मुझे पूछ कर देखो लो अगर तुम बॉय गर्ल कहेंगे हेड टेल कहेंगे डाई के लिए 1 2 3 4 5 6 कहेंगे मैच के लिए विन लॉस ड्रॉ कहेंगे तो क्या होता है कि ये बॉय गर्ल की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ईच है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है ऐसे बर का तो लेकिन ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज हाफ एंड गर्ल इज हाफ इसका मतलब तुमको अगर 2 चिल्ड्रन है तो एक बॉय और एक गर्ल होना ही चाहिए ऐसा नहीं होता है
बर का स्मॉल नंबर के लिए हाफ ऑफ नहीं होता है. हाँ, इफ यू कंसिडर 140 crore population of India, then 50% are males and 50% are females. तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं ना, वो स्मॉल नंबर के लिए नहीं होता है. नहीं तो तुम क्या बोलेंगे, अभी पहला बॉय हो गया है तो मतलब दूसरी गर्ल ही होना चाहिए, क्योंकि हमको पढ़ाया गया है बॉय की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 50% है, गर्ल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो पहला बॉय है तो दूसरी गर्ल होना ही चाहिए. असं नसतं. हाँ, लेकिन अगर तुमको इन्फाइनाइटली मेनी चिल्ड्रन हो गए तो आधे बॉय हो गए और आधे गर्ल्स हो गए. समझा क्या तुमको? तो व्हाट इज द लिमिटेशन? दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल. बर का if it is applicable if these events are एक मिनट applicable when total number of events is finite. ये थोड़ा सा रॉन्ग है. ये इक्वली लाइकली है. इक्वली लाइकली मीन्स हाफ ऑफ. ये इक्वली लाइकली होना चाहिए, लेकिन वो लार्ज नंबर के लिए होता है. और एप्लीकेबल इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. ये भी ट्रू है इसके लिए कि पहला बॉय है दूसरा क्या है, वो इंडिपेंडेंट है ना. दोनों भी बॉय हो सकते, दोनों भी गर्ल हो सकते. समझा क्या? तो व्हाट चॉइस विल आई मार्क? विच चॉइस शुड आई मार्क इसमें से? बोला कि ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? बी. ए रॉन्ग है तो सिर्फ बी मार्क करो. सी क्यों नहीं मार्क करेंगे? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. ऐसा कब होता है? लार्ज नंबर के लिए होता है. ऐसे स्मॉल नंबर के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होता है. तो अभी क्या है, वो क्वेश्चन में ही थोड़ा एम्बिग्यूटी है, लेकिन समझने की कोशिश करो. बेसिकली चॉइस शुड हैव बीन दैट इट इज फॉर लार्ज नंबर, इट्स नॉट फॉर स्मॉल नंबर. ये एक्चुअली वहां वो ऐसा चॉइस चाहिए था. बाकी जो दो चॉइसेस वैसे भी रॉन्ग है. समझा क्या? हाफ कंप्लीट है, हाफ करेक्ट है. पूरा करेक्ट क्या होगा? दैट इफ इट इज फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन. तो ये 32nd को छोड़ दो. लुक एट दिस 33rd. कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम स्टेट्स व्हाट? बोलो पटकन. 33rd. हाँ, P of A intersection B is P of A into P of B when you know A has already happened. So which choice will you mark? Which choice will you mark? A. When will you mark the C choice? When will you mark the C choice? बोला कि when will you mark the C choice? When they are independent. But compound probability theorem is P of A into P of B given. And when you going to mark the D choice? When they want addition theorem. They don't want addition theorem here. 34th. A and B are mutually exclusive. Now some very good questions are getting started now. तो फिर मेरे तरफ देखो. They are mutually exclusive then. Tell me what should happen if they are mutually exclusive. What should happen? इसमें कायत्री बोला रे. P of A intersection B must be 0. And P of A union B must be P of A plus P of B. ये डोके में ऐसा घूमता रहना चाहिए. समझा क्या? अभी यहाँ सब ऑलमोस्ट ऑल चॉइसेस में ये P of A minus B के बारे में बोल रहे हैं. Now tell me basically what is P of A minus B? Entire A minus common part. But if they are mutually exclusive, then this is 0. And therefore P of A minus B should be P of A. And P of B minus A should be P of B. ये समझा क्या तुमको? ये ऐसा एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, एग्जॉस्टिव, इक्वली, ये ऐसा फटाफट स्पॉन्टेनिटी आनी चाहिए. समझा बाळांनो? 35th. देखो अनदर वेरी गुड क्वेश्चन. अब तुमको जमेगा, ये तुम करेंगे तो जमेगा. बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A. क्या मतलब है? P of A minus P of A intersection B. This is P of B minus P of A intersection B. लेकिन ये कट तो P of A
should be P of B. That means they are equally likely. है कि नहीं भारी? सोपा है कि नहीं? Very simple. तुम्हारे कैपेसिटी के बाहर का होता ना तो आई वुड हैव टोल्ड यू ये तुम्हारा बस का नहीं है, पर ये तुम्हारे ना सिर्फ बस का है बट रिक्शा का भी है और साइकिल का भी. समझा क्या? ठीक है. 36. Interesting number 36. Look, A, B, C are independent. Then tell me what happens if A, B, C are independent. A, B, C dash, A, B dash, C, A, B dash, C dash. All those numbers which are possible, they are all independent. So what will you write? Any. No. Any means possible number. A, B, C dash, A, B dash, C, A, B dash, C dash, A dash, B, C, A dash, B, C dash, A, B, वगैरह वगैरह. समझा? 37. हाँ. If they are independent, then बोलो फटाफट. P of A intersection B equal to what? P of A into P of B. समझा? Waiter understand. 38. Value of random variable can be. Value of random variable can be. बोला. Now random variable can be profit. Profit can be positive. Profit can be negative. Profit can be zero. Profit can be fraction. So profit is any real number. है कि नहीं? थोड़ा सा कॉमन सेंस डोका चलाओ. 39. एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एरिथमेटिक मीन, एवरेज. तो एवरेज में क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट इज अगेन एनी रियल नंबर. समझा? If all the values are equal, then if all the values are equal, हाँ म्हणजे के no variation, standard deviation is 0. हाँ expectation of xy रिवीजन में सब कुछ लिया है. Expectation of xy is equal to expectation of x into expectation of y. Very simple. अभी 42nd. If the values are x1, x2, x3, x4 with probability p1, p2, p3, p4, expectation of x is what? पहले आंसर दो. x1, p1, x2, p2, x3, p3, x4, p4. चॉइस दिखता है, दिखने में दिखता है बी चॉइस इज करेक्ट, पर वहां प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने x3, p2 कहा है. तो आंखों में तेल डाल के देखो. कहाँ क्या डाल के देखेंगे? हाँ 43rd. देखो आज के एक दिन में हमने कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं एमसीक्यूज, है कि नहीं? तो यही मैं बोलता हूं कि जो पूरे साल भर नहीं होता है ना, लास्ट एक मंथ में होता है, क्योंकि योर बॉडी एंड माइंड आर ट्यून्ड विथ सिंसिरिटी एंड द डेडिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड. बाकी के समय इतना बैठने को बोलता तुमको तो तुम नहीं बैठते. बैठ मत. नेक्स्ट 43rd. If it is a probability mass function, tell me what should happen. Probability should be greater than or equal to 0 and sum must be 1. तो तुम इसमें से कौन सा चॉइस मार्क करेंगे? ए में क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0. तो एक्चुअली ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. फिर मार्क द चॉइस डी. दैट प्रोवाइड. हाँ बट इसके साथ और एक होना चाहिए कि शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. बट एनीवे डी चॉइस इज करेक्ट. 44. हाँ आता एक मिनट. ये 44th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा मेरे तरफ देखो बरका. इट्स अ गुड क्वेश्चन. मतलब when you prepare this, you have to prepare this question because anyway that is very important. होता क्या है कि ये वेरिएंस का बेसिक मीनिंग है
नका ना बोलू अरे. x minus x bar is a variation. ये कोरिलेशन से रिलेटेड है. x माइनस एक्स बार इज अ वेरिएशन. स्क्वायर करो और फिर एवरेज लो. ये एक फॉर्मूला है फॉर वेरिएंस और ये बेसिक फॉर्मूला है. एक सिंप्लीफाई करके एमसीटीएमडी में लिया था वो है 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द स्क्वायर. ये दूसरा है. अभी हमने ये लिखा है इस चैप्टर में कि ये टेक टोटल अपॉन एन इज अ मीन एंड मीन इज एक्सपेक्टेशन. मीन मीन्स एक्सपेक्टेशन एंड देयरफॉर this is also written as expectation of x minus x bar the square. It could also be written as, ये सब एक ही फॉर्मूला के डिफरेंट फॉर्म्स है. ये भी एक्सपेक्टेशन है और x bar means expectation. So it could also be written as expectation of x square minus expectation of x the bracket square. But x bar is a mean. अभी मीन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय म्यू. थोड़ा सा फर्क है. एक्स बार सैंपल के लिए होता है पर तो क्या जाऊं दे. दिसंबर में फेल हो गए तो हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां सैंपल और पॉपुलेशन का चैप्टर नया इंक्लूड किया गया है. नापास होके दिखाओ फिर. नहीं गए तोंड बघ अर्षद. नहीं बड़े. तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू द ब्रैकेट स्क्वायर है कि नहीं. अभी ये एक्स बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट. ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स बार मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ये सब डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स है. बेसिक मीनिंग सेम है. तो ये लिखो. ये सब वेरिएंस के फॉर्मूले है. लिखो बाळांनो. ठीक है. कोणाचं काय काय बघते. काय हो गया क्या बाळांनो. तो फिर तो यहां का कौन सा चॉइस मार्क करेंगे. एक्चुअली ना ये ए बी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है. हाँ ए और बी या ए एंड बी होता तो वो भी लिखते क्योंकि बोथ आर करेक्ट. एनीवे 25th 45th. हाँ अभी लुक एट मी. ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. My question to you is, tell me y is equal to 2 minus 3x. What does that mean? Bolo. Expectation of y is 2 minus 3 times expectation of x. ये expectation के लिए मतलब मीन के लिए मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए. लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विल बी ये 2 का वेरिएशन 0 होता है. अभी ये मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है. एक मिनट रे बाळांनो प्लीज बघा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर नेगेटिव. तो मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई मीन दिस इज 3 सो 3 इंटू सिग्मा एक्स. कहाँ चॉइस है देखो. समझा क्या तुमको. हाँ लेकिन मैंने एक मिनट वेरिएंस पूछा होता तो you would have said variance of y
इज -3 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, मतलब 9 टाइम्स वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस इज विद द स्क्वायर इफेक्ट। समझा क्या तुमको? छोटे छोटे पिटुकले पिटुकले क्वेश्चंस होते हैं। अरे एक्झाम तुम्हाला द्यायची का मला द्यायची आहे? म्हणजे काय, मी इथेच बसू दे तू चालले बाहेर? 46 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अभी ये सोपे सोपे क्वेश्चन है। देखो, गेटिंग अ हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर, अभी एक बात समझो, 2 कॉइन्स टॉस्ड और 1 कॉइन टॉस्ड ट्वाइस एक ही होता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? अ हेड मीन्स 1 हेड, it will be HTTH, so probability will be 2/4. त्याच्यात काय कौतुक आहे? 47 coin is tossed twice, at least one tail, points बोलो। HT क्या बोल, HTTHTT, so 3/4। 48, हाँ, now look at me, this is a good question। 48, look, 48, die is rolled once, तो फिर आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6। दे वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या? 3 6, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6, मतलब 1/3, मतलब 1 इज फेवरेबल, 2 आर अगेंस्ट। अभी दे वांट ऑड्स इन फेवर, तो फेवर पहला आएगा, तो व्हाट विल इट बी? 1:2। समझा क्या तुमको? टोटल 3 है, कड़ा ना? 49, ये सब इजी क्वेश्चंस है। देखो, अ बैग कंटेन्स 15 1 रुपी कॉइन्स, 25 2 रुपीज कॉइन्स, 10 5 रुपीज कॉइन्स। टोटल कॉइन कितने हैं? टोटल कॉइन कितने हैं? 50। व्हाट प्रोबेबिलिटी डू दे वांट नॉट गेटिंग अ 1 रुपी? ऐसे कितने कॉइन है कि जो 1 रुपी के नहीं है? काय माहिती म्हणू, 25 प्लस 10 35। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 35 अपॉन 50, ये 0.7 होता है क्या? चलो, हाँ, 50 ABCR, मेरे का ABCR independent events, probability is given। Tell me, if independent, what becomes what? Intersection becomes a product। So as simple as that, that these all intersections will be product, so it will be 0.3 into 0.2, तो करो प्रोडक्ट, कॅल्क्युलेटर पर करो, केलं, मग सोलून खाऊन टाक, केलं। हो गया क्या? ठीक है। 51st, लुक, 51st के लिए मेरे तरफ देखो, है कि नहीं? इजी है चैप्टर, रियली इजी, ट्रस्ट मी। 51st के लिए मेरे तरफ देखो। अटेंशन स्पैन कम हो गया है तो 5 मिनट का ब्रेक दे सकता हूं, मेरे लिए जरूरत नहीं, तुमको, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं होगा तो उगित बैठने में कोई मजा नहीं है।
क्या करने का है? 5 मिनट का ब्रेक। तुम देखते ही नहीं है मेरे तरफ, और क्या है? क्या है? तुम अगर ऐसे बोलेंगे कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देखेंगे तो वो होने वाला नहीं है तुम्हारे से। करना है तो अभी करो, नहीं तो मत करो। काय करायचंय? ब्रेक चाहिए? नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए मैडम, ब्रेक में ब्रेकअप होता है, भांडण होता है। अभी 51st के लिए मेरे तरफ देखो। 2 letters आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम होम। बस 2 letters आर टेकन मीन सिलेक्टेड। मैंने तुमको चॉइस दिया था ब्रेक का, तुमने नहीं कहा है वॉलंटरीली, तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे फोकस्ड, अदरवाइज यू विल फेल। 2 letters आर टेकन मीन सिलेक्टेड ना, मतलब सिलेक्टेड मीन्स कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नन ऑफ देम इज अ वॉवेल। तो जब जब कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो तो यू हैव वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने हैं? 2। कॉन्सोनेंट कितने हैं? डू यू वांट एनी वॉवेल? तो टेक 0, टेक 2, आणि therefore 2C0 into 2C2 over 4C2। समझा क्या? आणि therefore it would have been what? 2C2 is 1, 4C2 is 6, so 1/6 is 1। हाँ, लेकिन यही वर्ड बनाना होता तो फिर डिनोमिनेटर में आता 4P2, और फिर क्या होता कि ये सिर्फ सिलेक्ट करके नहीं होता, फिर तुमको वो सिलेक्टेड 2 letters को अरेंज करना होता। तो टेक 0 आउट ऑफ 2, टेक 2 आउट ऑफ 2 एंड अरेंज टू 2P2। तो इट वुड हैव बीन 2C0, 2C2, 2P2। ऐसा होता वो अगर वर्ड करना होता तो। वर्ड मतलब सिलेक्ट एंड अरेंज, लेकिन यहां सिर्फ सिलेक्ट है। समझा क्या? यार हो म्हणा की। हाँ, 50 सेकंड। सेम टू यू। तो बास ना आता म्हटलं सेम टू यू, तर बस कर तुझं बोलणं। अभी लुक एट मी। Card is drawn. Abhi, this is a good question. Stop talking. Stop talking. Stop talking. Card is drawn from pack of 52 cards, getting a spade और S। तो तुमको स्पेड भी चलेगा और एसएस भी चलेगा। तो फेवरेबल कार्ड्स कौन से हैं? ऑल 13 स्पेड्स। और एसएस मतलब एक के कितने हैं? 4। बट उसमें से स्पीक एक का वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो तुम्हारे लिए फेवरेबल कार्ड्स 13 स्पेड्स प्लस 3 अदर एसेट्स, इतना ही रहेगा। समझा क्या? तो इट विल बी 16 आणि देयरफॉर 16C1 ओवर 52C1, 16 ओवर 52, ये आंसर होगा। ये कळा का तुमको? स्पेड चाहिए या एस चाहिए? 13 स्पेड है, एक एक का उसमें आ गया है, तो बाकी रहे 3 एक के। गुड। 53rd। X and Y are independent. So tell me, what is the expectation of X minus Y? What is the expectation of X minus Y? Expectation of X minus Y is expectation of X minus expectation of Y. 4, 5, which is 2. समझा? And 54 के लिए मेरे तरफ देखो। Variance of X is 23. What is variance? अभी मेरे तरफ देखो। Variance of 2x plus 10. Variance है कि नहीं? तो it goes with square effect. So it will become डोळे बघ तिचे कसे झाले। काय चिमणे, दमली का?
55th. What is the probability? अच्छा हाँ, एक मिनट जरा मेरे तरफ देखो, ये 55th के लिए देखो, हाँ मेरे तरफ, स्टॉप टॉकिंग, लुक, what is the probability of getting at least 1/6 from the 3 throws of a die? हमने आपको बोला है type 1 is applicable if 1 2 3 4 coins are tossed, 1 or 2 dice are thrown, number is drawn, normal year, leap year, 53 Sundays या 53 Mondays. अभी ये 3 डाई वाला नहीं हो सकता उससे बर का, तो हम क्या करेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली पॉसिबल यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देखो, एक डाई वो तुमको 6 देगा या 6 नहीं देगा तो बर्नौली ट्रायल. 3 डाइस थ्रो किए हैं तो n विल बी 3. एक मिनट प्लीज, n विल बी 3. समझा? अभी 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6. तो q कितना होगा? 5/6. एंड यू वांट एटलीस्ट 1/6, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. मतलब probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3, but then this is 1 minus probability of 0. So 1 minus 3c 0, 5/6 raised to 3. तो 1 minus 5/6 raised to 3 would be the answer. देखो 1 to die के लिए probability से हो सकता है, उसके आगे गया तो बाइनोमियल में घुसने का. कहाँ घुसने का? मतलब अभी तुमको फर्क समझेगा प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में क्या फर्क है. 2 डाइस के लिए प्रोबेबिलिटी, 3 के आगे, 3 और 3 के आगे बाइनोमियल, 4 कॉइन तक प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर बाइनोमियल, और उसके ऊपर मतलब वो 10 के भी ऊपर गया तो बाइनोमियल कन्वर्टेड टू पॉइसन. ऐसा है ते सगळं. समझा? यारे हो म्हणा. ठीक है. सेट बी ती वो कशी करते तो है क्या स्टॅमिना बाकी नहीं. हे बघा, लेना है तो उसका फायदा हो. क्या करना है? नहीं तो कल 1 बजे भी मैं ले सकता हूं. आज का स्टैमिना खत्म हो गया है तो कल 1 बजे वापस मिल सकते हैं. आई डोंट माइंड. आई ऐसे अनले सी क्या है माहिती का, तुम्हारे में से बहुतेक सारे होपलेस ही है, तो इतना स्टैमिना तुम्हारे में है नहीं. ब्रेक लेके कंटिन्यू. हे बघा, सीरियसली करेंगे तो फायदा होगा. टाइम पास के लिए इधर आके बैठे तो नहीं होगा. ऑल दोज आर ऑनलाइन. रिमेंबर, इन लोगों का इतना कंसंट्रेशन इसलिए होता है कि ये एक ग्रुप में बैठे हैं. जो ऑनलाइन है वो अकेले अकेले बैठते हैं तो इतना कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता, नींद आती है या तो फिर चैट करते हैं, ऐसा कुछ तो भी. समझा क्या? तो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखो. काय करने का? थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, फिर भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. ओके. अभी बजा है 4:18, तो कब मिलेंगे? 4:35. 4:35 को मिलेंगे. आएंगे तो आते समय मेरे लिए भी कॉफी का कप लेके आओ.
4:35 was the time decided. It's 4:38. We start. Chalo Bayanno, I want your complete attention. Look at me. Begin. Here we start with exercise B of probability. All what you need is a confidence. All what you need is an optimism. All what you need is an aggression. Kill the problem before the problem kills you. Is that clear? Life is like an ice cream. Enjoy it till it is chill and till you are hot. समझा क्या? Ice cream should be chill and you should be hot enough to digest it. क्या है बर का? तुला नाही म्हणणार मी hot. तुला कोण म्हणेल hot? चलो बाळांनो, सेट बी के लिए अब तुम मेरे तरफ देखो. बस आता ये बॉल के प्रॉब्लम शुरू हो गए. देखो look at me. 2 balls are drawn from a bag containing 5 are white and 7 are black. What is the probability that they are of different colors? अभी तुम मेरे को बोलो कितनी गोड माझी एकच फ्रेंड मी इतक्या लोकांना सांगितलं कॉफी तिने फक्त एकटीने आणली आहे की नाही. हा ते नको मला. लोक आता तू नक्की पास होणार काय? एकदम मला कॉफी दिली की पूर्वा पास. Look at me. You must be jealous of me, na? When I did her like this, you must be jealous of me, na? चलो बाळांनो जाऊ दे बस. टू बॉल्स आर ड्रॉन. अभी कोई बोलेगा नहीं. जितना एंजॉय करना था, फन करना था, उतना हो गया है. अभी देखो सो स्वीट. तुम भी पास हो गए. तुम वैसे भी पास हो गए बिकॉज यू आर अ बॉय. Look at me. Tell me how many balls you have. Atabas. Have they said one by one?
Had they said these two balls are drawn one by one? No. So that means it is simultaneous. Now how many balls you have? 12. So the total number is going to be 12C2. जब जब combination का problem आता है तो you have to make the classes. So what classes are there? White, black. Whites are 5, blacks are 7. Take one, take one. So it will be like 5C1 into 7C1. Yes or no? Divided by, will it be 12C2? But 5C1 is 5, 7C1 is 7. And what about 12C2? Is 12 into 11 over 2 factorial. That is 66. You have to be very, very strong in permutation combination for dealing with problems like these. Over. पूर्वा छान आहे काय? Coffee. काय? हे बघ, तू काय आणलेलं नाही कॉफी, कळलं का? तू काय बोलू नको. तो फिर सेकंड प्रॉब्लम के लिए मेरे तरफ देखो. अच्छा बस रे, हो गया अभी, बस पूरा करो. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7? अभी देखो, जब वो 2 dice are thrown or a die is thrown 2 times, possible totals are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now what they want is at least 7. At least 7 में आता है 7, 8, 9, 10, 11, 12. मग 7 के points count करो. It will be 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. 8 के points हो गए 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. ये ऐसे सब टोटल करो और डिवाइडेड बाय 36 इज द आंसर. आई गिव यू टाइम, कम ऑन स्टार्ट. लेकिन थोड़ा सा जरा मेरे तरफ देखो. एक्सेप्ट जून 2023 अटेम्प्ट, such big calculation problems are never asked because they themselves have said this problem is of 2 marks. तो छोटे नंबर्स हो गए, समझा क्या? तो बट ठीक है, नहीं अपने लिए क्या है, अपने को आता है. तो करो काउंट कितने होते हैं पॉइंट्स. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 21 by 36. Probability is 21 by 36. मतलब 7 by 12. आया क्या बाळांनो? दुसरी पूर्वा गेली का घरी? काय? तुला कसं कळलं? तेरे को कैसे समझ? चलो बाळांनो, थर्ड क्वेश्चन. हाँ आता नका बोलू, आता लेटेस्ट स्टे फोकस्ड. तुम्हाला एक सांगू का, म्हणजे सिक्रेट सांगू का? सिक्रेट असं आहे की आज माझ्या सालीचा बर्थडे आणि मला तिच्याबरोबर बाहेर जायचंय. त्यामुळे आता तिच्याबरोबर म्हणजे सगळे जाणार, पण म्हणजे तिच्याबरोबर, तर म्हणून जरा पटपट करा. ऑल राईट, नाव यू विल कॉपरेट मी, ओके? हां, ईश्य असं कसं सांगू? चलो, व्हॉट इज द चान्स? नाही आता खरं सिरियस. काय? व्हॉट इज द चान्स ऑफ गेटिंग ॲटलीस्ट 1 डिफेक्टिव्ह आयटम फ्रॉम 3 randomly taken out of 6 of which 2 are defective. जब जब प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन का होता है तब तब क्लासेस बनाओ. तो द क्लासेस आर डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव,
defectives are 2, so non-defectives are 4. You are drawing total what? 3. And then what happens is that you want how many? At least one defective. So 1 defective, 2 non-defective, 2 defective, 1, 3, 0. And therefore the answer is 2C1 into 4C2 plus 2C2 into 4C1. अभी 2 में से 3 नहीं निकाल सकते, वैलिड है, अदरवाइज पॉसिबल है, बट 2 ही डिफेक्टिव है. सो दैट डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 6, तो 6C2, 6C3, 3 यू आर ड्रॉइंग 3 ना, तो टोटल इज 6C3. कैलकुलेशन नंतर करो आम्ही, समझा? गुड. फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स बी सीरियस नाउ, ओके? Fourth, 2 unbiased dice are thrown. What is the probability of getting no difference? अभी no difference वाले points हो गए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, and therefore the probability will be 6 by 36 will be 1 by 6. समझा? Very easy questions. गुड. फिफ्थ पॉइंट, ABCR. अभी यहां थोड़ा सा करेक्शन चाहिए क्योंकि एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है, ऐसा नहीं हो सकता. एक मिनट रे, स्टॉप टॉकिंग. तो फिर ये इंडिपेंडेंट को खोड़ दो. अभी खोड़ो ऐसा. अभी they are mutually exclusive and exhaustive. What is the probability that they occur simultaneously? प्रॉब्लम ऐसा है कि ये एक्सक्लूसिव है तो टुगेदर दे कैनॉट हैपन ना, आणि therefore this probability without doing any calculation is 0. Together they cannot happen. Sixth of that, there are 10 balls, number from 1 to 10. Very easy sum sign. Barka. One of them is selected at random. What is the probability that the number printed would be an odd number greater than 4? So tell me, what are the odd numbers greater than 4 up till 10? 9. So the probability will be 3 by 10. 10 balls are there, na? Yaar ho ki nahi? So 3 by 10 is the probability. Seventh. It's a good question. Number 7. Look. Following are the wages of 8 workers. Following are the wages of 8 English worker, not Marathi worker. If one of them is selected at random, what is the probability that wage is less than average? Good question. तो मेरे को बोलो कि पहले तो तुम्हें एवरेज निकालना पड़ेगा. एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन, मतलब टेक टोटल अपॉन n ऑफ x. एवरेज निकालो बड़ा. 50. अभी 50 के नीचे चाहिए ना उनको, तो ऐसे कितने वर्कर है? 4. और टोटल कितने हैं? 8. तो 4 by 8. समझा? गुड क्वेश्चन. तो दिस 8वां इज अ गुड क्वेश्चन. Look, ABCR, mutually exclusive and exhaustive. Mutually exclusive and exhaustive, such that P of A is 2 times P of B is 3 times P of C. Abhi, here 2, 3, 4 probabilities are equal. We have taken this problem in the class. Then it should be equal to some number K. Therefore, probability of A is K. So probability of B is K by 2. 3 times probability of C is K. So probability of C is K by 3. But because they are disjoint as well as exhaustive, sum of
those probabilities must be 1. again the result हमने use किया sum of probabilities should be equal to 1. So if that is true, then k plus k by 2 plus k by 3 should be 1. अभी मेरे को बोलो ऐसा एलसीएम तुमको आता है क्या? तो एलसीएम हो गया 6, तो इट विल बिकम 6k plus 3k plus 2k should be 1. So 11k by 6 is 1. So k will be 6 by 11. So probability of A, that was k, it is 6 by 11. Probability of B is k by 2, means half of 6 by 11, which is 3 by 11. And probability of C is k by 3, so 1/3 of 6 by 11, that is 2 by 11. बड़ा ये जो हुआ है ना आज का लेक्चर, और जो इंडेक्स नंबर और एमसीटी एमडी और सेट रिलेशन जो हमने रात को किया था, पूरी ईमानदारी से के साथ करो. फन इज फन, जोक्स आर जोक्स, but joke is not a life, because otherwise life will become a joke. Deep ना? Deep था ना? इतना deep जा सकता है क्या? हो गया क्या? ठीक है. तो अभी उन्होंने क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्या आंसर आया? 3 by 11. Anyway, now अभी some extraordinarily good questions are starting. बिल्कुल नहीं बोलने का. क्या क्या दिया है देखो. बिल्कुल नहीं बोलना है. These questions are extremely good questions. Pin drop stylus. Probability of A but not B मतलब क्या? A minus B is 0.4. समझा? Probability of not A means A dash is 0.6. मतलब probability of A intersection भी 0.4 कट होके 0 रहेगा. तो A can happen, B can happen, but together they cannot happen. So they are mutually exclusive. Very good question. हो गया बाळांनो. ठीक है. 10 sum. A bag contains 12 balls numbered from 1 to 12. Ball is selected ability that is multiple of 5 or 6. तो ये ऐसे मल्टीपल ऑफ 5 और 6 वाले कौन से नंबर से देखो. 5 आएगा, 10 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा. तो 4/12. आता 4/12 मतलब 1/3 ये बोलने में कोई कौतुक नहीं है. हो गया क्या? Then I consider number what? 1111. Another fantastic question. Look at me. थोड़ा सा करेक्शन चाहिए. P of A is 3 by 5. What is P of A given B? P of A intersection B over P of B. ये है. लेकिन अभी तुमको A इंटरसेक्शन भी निकालना है. तो फिर एडिशन थ्योरम से क्या होता है कि P of A यूनियन B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. इसको इधर खींचो, तो P of A intersection B
विल बी 3/5 प्लस 2/3/4, तो ये कितना आता है बोलो मेरे को। ऐसा सरल कैलकुलेटर पर करो, ये तुम्हारे अदरवाइज बस की बात नहीं है। कितना आया? थोड़ा कैलकुलेटर पर करो, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा लेकिन आएगा, करो। 0.516। अभी देयर फॉर दिस a given b will be 0.516 over probability of b is 2/3। 2/3 का मतलब क्या? 0.67 है कि नहीं? तो करो कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आएगा क्योंकि 2/3 इज नॉट एग्जैक्टली 0.66 0.67। 0 पॉइंट, तो 0.775 इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर, लेकिन ठीक है। 12th for, another good question. Now all these questions in this B part are very good. Look, in you have to find, they are given to be independent. एक मिनट नका ना बोलो, अरे please, I am trying very sincerely, please. They are given to be independent and you have to find probability of A plus B. What do you mean by A plus B? A union B. हमें पता है कि somebody मतलब 1 minus nobody. So this is 1 minus probability of A dash intersection B dash. See how beautiful these questions are. But because they are independent, it will become probability of A dash into probability of B dash. समझा? Is that clear? So it would be 1 minus. अभी A की probability 3/5 है, तो A dash की probability होगी 2/5 और B की probability 2/3 है, तो this is 1/3. So it will be 1 minus 2/15. So it will be 13/15. Good questions. Thirteen sum. Another good sum. Look at me. Each question is a gem of question. अभी इसके सबके लेफ्ट हैंड के तरफ देखेंगे तो तुम्हें क्या मिलता है? What is the left hand side of all the choices? Is P of A given B. What is the formula? P of A intersection B over P of B. एक बार करेंगे, एक बार पता है ना कैसे करना है, तो फिर वो एग्जाम में आसान जाएगा। अतः होता है क्या कि राइट हैंड साइड में वो क्या है, P अपॉन Q, Q अपॉन P वगैरह, है कि नहीं? तो अभी मेरे तरफ देखो, ये P ऑफ B तो Q ही दिया है, तो डिनोमिनेटर ये Q ही होगा। मेरे कहा अभी मेरे तरफ देखो और बोलो A इंटरसेक्शन B, है कि नहीं? ये इंटरसेक्शन, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ होल A. A intersection B is part of A, na? So my claim is that this is less than or equal to probability of A over Q. क्योंकि ये इससे इक्वल है, नहीं तो छोटा है। अगर A and B इक्वल है तो फिर A और A इंटरसेक्शन B सेम ही है, तो इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं। महाराष्ट्र कैन नॉट बी लार्जर देन इंडिया, and that means this is less than or equal to P upon Q. Beautiful sums. Now 14, another beauty. Look at me. क्या दिया है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश दिया है. हाँ, आता जरा मेरे तरफ देखो. Extremely good. My question is, what will be probability of A dash union B dash? By addition theorem, it will be probability of A dash plus probability of B dash minus probability of A dash intersection B dash. कोई शक होना भी नहीं चाहिए. Then, listen therefore, probability of A dash union B dash is P of A dash plus P of B dash. आता A dash intersection B dash. Listen carefully. By De Morgan's law, you can write it as A union B, the bracket dash. ये क्या कन्वर्जन किया है, क्यों किया है? क्योंकि मेरे को A यूनियन B चाहिए, इसलिए किया है. तो A dash intersection B dash is A union B bracket dash. Any doubt? पढ़ो, तुमको नहीं आएगा वो 6 LCM वगैरह. आयता है तो करो, मेरा क्या. करो. 6 is LCM. What it means is, this is 3 plus 4 minus 5. 2 by 6 आया क्या? मतलब 1 by 3 आया क्या? But that is probability of A union B, the bracket dash is 1 by 3. So probability of A union B will have to be 2 by 3. समझा? Is that clear? Dash की probability 1 by 3 है, तो 2 by 3 है कि नहीं? गुड सम्स. और आसान है, तुमको एक बार पता है तो फिर आसान है. Different questions. You don't have to solve many questions. You have to solve the same questions many times. समझा? 15. Another beauty. A and B are independent. A union B is given. A is given. B is asked. My question is, if they are independent, then probability of A union B, matlab at least one. Somebody. So tell me, somebody is equal to what? म्हणजे A dash intersection B dash. So P of A union B is P of A dash into P of B dash, because they are. अभी ये A union B दिया है 2 by 3 is equal to 1 minus A दिया है 2 by 5, तो A dash होगा 3 by 5 and that into probability of B dash. है कि नहीं? ऐसे एडजस्टमेंट करके फिर वो मिलेगा. and therefore this will be probability of B dash 3 by 5 into probability of B dash will be 1 minus 2 by 3, which is 1 by 3. Dash will be 1 by 3 into 5 by 3, so 5 by 9. So probability of B will be 4 by 9. Beautiful questions. Extremely good. Aggression for win is the only way you can get marks. समझा पड़ा? What do you mean by A dash intersection B dash? Nobody. मतलब nobody means what? It's 1 minus somebody. है कि नहीं? But then this means, don't forget bracket, P of A plus P of B minus P of A intersection B. So it is 1 minus A plus B minus C. Open. 1 minus A minus B plus C. समझा? These mathematical sums are very, very good sums.
हो गया क्या 17 18? हाँ, अभी some easier questions starting. Only A. What do you mean by only A? A होता है and B नहीं होता है and C नहीं होता है. A intersection B dash intersection C dash. तो जहाँ भी वो चॉइस है. Okay. अतः this is a fantastic question. 19. A family. नका ना बोलो अरे please. A family has 2 children. Now my question is, if there are 2 children, then sample space is what? Just try to consider this 19 and 20 as the star questions. Very good question. So tell me, sample space is what? Boy and boy, boy and girl, girl and boy, girl and girl. So n of s is 4. But होता क्या है? This is condition, effect of condition. यह सब टाइप नंबर 2 लिया था हमने क्लास में. ऑफ टाइप नंबर 4. लिसन, इफ के बाद जो भी आता है वो होती है कंडीशन गिवन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन गिवन? दैट व्हाट इज द कंडीशन गिवन? दैट 1 इज गर्ल. अगर एक गर्ल है ऐसा तुमको पता है तो बीबी इज नॉट पॉसिबल. अतः बीबी ही नहीं है तो गर्ल कैसे होगी तुमको? समझा क्या? But anyhow, that is that S will be now BG. So N of S will come down to what? That will go from 4 to 3 now. And you want other is also a girl. That means we are interested in what? The point GG. So the probability will be 1 by 3. It's a very good question. It's in effect of condition that sample space is getting reduced. कहो ना समझ गया. Very good question. Because of the condition given, the sample space gets reduced. तो फिर अभी 20th question. 2 coins are tossed. My question is sample space is what? H and H, H and T, T and H, T and T. But then again they say if. Tell me what is the condition given? बोला कि first is head. मतलब सिर्फ वही रहेंगे कि जहां फर्स्ट हेड है. मतलब एच 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 टी आणि therefore n of which will reduce down to only 2. And you want that other second should be a tail. So you are interested in just ht. So probability will be half. यह समझा तुमको? इफ के बाद जो आता है वो क्या होती है? ये सब हमने क्लास में लिया है. इसमें से एक भी अनसीन प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ रिवीजन. समझा? मैराथन डिक्लेयर किया और फिर फॉर्मेलिटी के लिए कुछ तो लिया और फिर छोड़ दिया. ये मेरे से नहीं होगा. लेना है तो फिर पूरा यूजफुल होना चाहिए. समझा क्या? क्योंकि अभी पॉपुलैरिटी, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इसकी कोई मेरे को जरूरत ही नहीं है ना. कभी भी नहीं थी. 35 इयर्स में कभी भी नहीं थी. विदाउट एडवर्टीजमेंट आई यूज्ड टू टेक द एमटेक स्टूडेंट्स आल्सो. समझा क्या? सो दैट इज नॉट. टीचर शुड बी फोकस्ड ऑन स्टूडेंट सक्सेस. दैट्स व्हाट इज माय प्रिंसिपल. हो गया क्या? 21st. And that's a simple question. Tell me, values are given, probabilities are given. So how would you find the expectation? It will be 0 into 0.3, 1 into 0.5, 2 into 0.2. करो कितना होता है? x1 p1 x2 p2 ना.
हो म्हणे ना बाळांनो. ठीक है. 22nd and the last of, I mean 22nd of this क्या दिया है? y is equal to minus 3x plus 4 आणि मग स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ y. बोलो क्या करूं? बोलो. Standard deviation of y. What should I write? Modulus of minus 3 into standard deviation of x. So 3 into 2 is 6. समझा? Is that clear, बाळांनो? हो गया है क्या? आणि मग 23rd. हाँ, now look at me, हाँ, good question. हमेशा जब इस तरीके के इक्वेशंस आते हैं, whether it is correlation chapter, probability chapter, distribution chapter, MCT MD chapter, you have to put it in the form y equal to something, या u equal to something, v equal to something. समझा? तो फिर tell me क्या कहूँ? 3y is equal to minus 2x minus 4. तो y is minus 2 by 3x minus 4 by 3. समझा बाळांनो? अभी they want variance of y, but variance is with the square effect ना? यार हो म्हणे ना? तो it will be minus 2 by 3 का square into variance of x. So it will be 4 by 9. Variance of x कितना है? 6. So will it be 24 by 9? 8 by 3. आया? Is it clear? सेट C में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और हमें करना है. Only thing is that you can understand the delicate sweet part of my today's evening. बरोबर ना? The sweet part of my today's evening, and therefore we postpone it to tomorrow. Tomorrow, एक minute, stop talking. Tomorrow, we'll meet at 1 o'clock. Accounts परसों होगा. Accounts को मैं बोलूँगा, मनी सर is given. I'll tell him. We'll meet at 1 o'clock. फिर कल हम ये भी पूरा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा करेंगे. इंडेक्स नंबर किया है ना रात को? फिर उगीच काय सारखं सारखं तेच. हो सका तो लॉजिकल रीजनिंग भी करेंगे. समझा? येते कॅल्क्युलस, अरे 3 क्वेश्चन्स आहेत, 2च क्वेश्चन्स आहेत, 2 किंवा 3. तो at what time are you going to meet tomorrow? 1 o'clock. Accounts will be day after. लेकिन मिस मत करो प्लीज. माई वेरी पर्सनल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू.